विषय के साथ शुरुआत करने की ठानी है। विषय है कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर, अ सिनर्जी। इस प्लेनरी सेशन में हम बहुत ही अच्छे विचार सुनेंगे। कॉन्शियसनेस पर जितना हम लोगों ने चिंतन किया है, जितना साइंस ने रिसर्च किया है, उतना ही स्पिरिचुअलिस्ट ने, आध्यात्म जगत के लोगों ने उसको अनुभव में उतारा है। क्या इन दोनों के बीच कुछ सामंजस्य हो सकता है? कॉग्निटिव बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा विषय है जो आज भी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि और गहराई से समझने और फिर इसे और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ऐसा लोग मानते हैं। अब क्योंकि साइंस का विषय है, तो हमारे पहले वक्ता के रूप में हम एक साइंटिस्ट को ही बुलाना चाहते हैं। हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर सुशील चंद्र जी जुड़ रहे हैं, जो एसोसिएट डायरेक्टर और साइंटिस्ट जी इनमास DRDO दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका और सुनते हैं उनके विचार। डॉक्टर सुशील चंद्र जी, नमस्कार। टुडे टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर, ए सिनर्जी। कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन, इसमें एक बहुत अच्छा समन्वय है। बट बिफोर आई कम टू द टॉपिक, मैं शेयर करना चाहूंगा कि वी आर अंडर एन इम्प्रेशन दैट वी आर ह्यूमन बीइंग विद द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विद द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो एक्चुअली जैसे हमको राजयोगा भी टीच करता है, दैट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी टू सोल. So ultimately, there is a difference in reality. There is one ultimate reality in which we understand the self, then to the reality which we have started understanding now. And now, because of the technology, it has changed further to virtual reality, जिसमें कि हम virtual reality को समझते हैं कि with the help of technology, we are able to dose our five senses in such a way कि जो वर्चुअल है वो हमें रियल नजर आता है। तो मैं शेयर करूंगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, देन व्हाट इज कॉग्निशन, हाउ कॉग्निशन कैन बी असिस्ड एंड एनहांस्ड, देन हाउ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द कॉन्शियसनेस एंड हाउ बिकॉज ऑफ दैट शिफ्ट आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज आर चेंज्ड और चैलेंज्ड. Then I'll be sharing what are the kinds of research which is going on in SpARC Wing, and ultimately I'll share that how we are able to improve our cognitive resilience and cognitive readiness because of the shift of consciousness level. So coming to the consciousness, अब consciousness में भी whether it is an external events which are affecting our factors, और क्या हमारी सोच में, क्या हमारे विचारों में चल रहा है. तो एक्सटर्नल इवेंट्स में बिकॉज ऑफ फाइव सेंसर्स, हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे कि हम सुनते हुए भी ना सुनने की भी ब्लेसिंग हमारे पास है, देखते हुए भी ना देखने की ब्लेसिंग हमारे पास है, और देखते हुए में उसमें क्या फिल्टर करना है और क्या हमने उसको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म मेमोरी तक में डालना है, और क्या इमीडिएट इफेक्टिव है. जैसे मैं इसकी जगह पे यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा. हमारे ग्रेट इंजीनियर जो हुए हैं विश्वेश्वरैया, उनके बारे में एक स्टोरी नोन है कि जब एक बार वो रेल में ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ दूरी के बाद में रेल की पटरी टूटी हुई थी, और वो जब रेल में चल रहे थे तभी उन्होंने अचानक उसकी चेन पुल की और ये कहा कि कुछ दूरी पर जाके देखें, शायद पटरी टूटी हुई है, और ये पाया गया कि दैट वाज करेक्ट. सो दैट मीन्स ही वाज फुल्ली अवेयर even about the sound of the train once it was moving. तो क्या उसमें से फिल्टर करना था, he was fully aware about it. So that means we are totally blessed with these kinds of filtering mechanism. And if we talk about the level of consciousness, in case of a Western and Eastern world, there are different level of consciousness. One, कि हमारी एक नॉर्मल अराउजल की स्टेट है जिसको हम कॉन्शियस लेवल बोलते हैं. दूसरा, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस. That means person is mentally confused. कारण कुछ भी हो सकता है, maybe because of alcohol, maybe because of drugs. So levels of consciousness.
सो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमारे ईस्टर्न वर्ड और वेस्टर्न वर्ड में मेनली 3 प्लस 1 मोर. For example, we are into the normal state of consciousness where normal arousal है. दूसरा जो हमारी clouded consciousness की stage होती है, that means person is conscious but he is in effect of alcohol or drugs, because of that reason he is mentally confused. तीसरी कि person unconscious है means वो sleep की state में. Western world में coma is also one of the state और ईस्टर्न वर्ड में इसको तुरई के रूप में दूसरी एक स्टेट को बोला गया है. नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें फ्रॉड के द्वारा 3 लेवल बताए गए हैं: कॉन्शियसनेस लेवल, प्री कॉन्शियसनेस लेवल, अनकॉन्शियसनेस लेवल. और इसी के बीच में ईगो, सुपर ईगो और आइडेंटिटी अपनी वो हमारी उसके हिसाब से वेरी कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एबल टू शिफ्ट माई कॉन्शियस that I'm a scientist. I'm a scientist can be, it can be a superiority complex and maybe कि मैं अपने टेक्नीशियन से उतने कायदे से बिहेव ना करूं. और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि हाउ टू परफॉर्म द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इट. एंड इसके बाद अगर हम इसमें शिफ्ट लाते हैं कॉन्शियसनेस के, दैट मीन्स आई एम ए सबऑर्डिनेट. अगर मेरा इमीडिएट बॉस आता है तो मेरा तुरंत बिहेवियर में चेंज आ जाता है. So that means because of the shift of consciousness level, we also change our behavioral pattern and our cognitive thinking also gets changed. Then there are altered forms of consciousness. और ये भी 3 तरह से, जैसे mainly जो spontaneous या physiologically induced या psychologically induced. In case of spontaneous, there are जैसे daydreaming है, ड्राउजीनेस है, ड्रीमिंग है. और ये भी हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करते हैं. हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आई मे स्टार्ट डे ड्रीमिंग, और मे बी के वंस द मोमेंट आई एम गेटिंग ड्राउजीनेस, बट बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज, बिकॉज ऑफ माई ब्रेन ट्रेनिंग, आई एम एबल टू अल्टर माई कॉन्शियसनेस. सो दैट मीन्स आई एम एबल टू कम आउट ऑफ माई ड्राउजीनेस ऑल्सो. देन फिर फिजियोलॉजिकली इंड्यूस्ड स्टेट होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हेलुसिनेशन, ऑर्गेज्म, या फूड और ऑक्सीजन स्टार्वेशन की वजह से जो हो जाता है. या अगर हम साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड का एग्जाम्पल लें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हिप्नोसिस विच इज गाइडेड बाय अदर्स एंड मेडिटेशन विच इज गाइडेड बाय द सेल्फ. देन ऑल्सो वी आर एबल टू ऑल्टर. नाउ कमिंग टू द कॉग्निटिव बिहेवियर, और जिसका कॉग्निशन का स्टार्ट होता है हमारी थिंकिंग से, थॉट्स. एंड थॉट्स को अगर हम कहें तो फॉर एग्जाम्पल इफ पॉजिटिव थॉट कम्स, जैसे कि आई एम एबल टू मैनेज माई सेल्फ. सो द मोमेंट दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट कम्स, मेरा जो मूड है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, मेरी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं. इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मेरे दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आए, मेरे को स्ट्रेस की फीलिंग्स आए, देन ऑल्सो वी कैन ऑल्टर आवर स्टेट बाय अप्लाइंग कि हम एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, दैट कुड बी मेडिटेशन, दैट कुड बी म्यूजिक, एंड जो भी हम रिपीटेटिवली अपने पैटर्न में ले आते हैं उन्हीं को हम फिर बिहेवियर कहलाते हैं. और उसी पे बेसिस पे हमारे वो संस्कार डिफाइन होने लगते हैं. और जिस तरीके से हम कॉग्निशन को अगर इवेल्युएट करने की बात करें तो हमारे डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ब्रेन्स get activated because of different kinds of cognitive factors. For example, जैसे अगर हम प्रोसीजरल मेमोरी की बात करें तो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है. बट अगर कोई अचानक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स या ऑल ऑफ ए सडन चैलेंज आते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. सो दैट मीन्स फॉर डिफरेंट कॉग्निटिव फैक्टर्स, वेदर इट इज प्लानिंग, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, इन सब की वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ locations in brain areas gets activated. और इसकी भी अगर हम क्लियर वे में अगर देखें तो इसको हम मॉनिटर कर पाते हैं हमारे डिफरेंट मोड से, जैसे कि ईजी, एमआरआई. और ईजी में भी अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट बैंड्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा. इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, वी कॉल इट वंस ए पर्सन इज कूल but fully alert, that means he is in alpha state of mind, and then he is able to alter his plannings in such a way that in case
if he is required to have a strategic planning, he is able to do that thing. बट अब अगर हम एक ही इंफॉर्मेशन के लिए अगर दो पर्सन्स की बात करें तो सेम इंफॉर्मेशन दोनों पर्सन हो सकता है दो डिफरेंट वे में परसीव करें. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ देयर अटेंशन लेवल, दे में फिल्टर आउट कि वो एक व्यक्ति क्या सिलेक्ट करता है उसमें से अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, दूसरा डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकता है, और उसी के बेसिस पे उनका कॉम्प्रिहेंशन होता है, एंड उसी के बेसिस पे वो लोग उसको अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना, या उसको वर्किंग मेमोरी में यूज करने का होता है. और उसी तरीके से उनकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी वो भी डिफाइन हो जाती है, और कंटिन्यूअस बिहेवियर यही हमारा उसके बेसिस पे संस्कार बन जाता है. और इसको भी अगर हमने फाइनली बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर हमें कॉग्निटिव एनहेंसमेंट की भी जरूरत आती है. मैं इसका यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा. फॉर एग्जांपल गूगल मैप. गूगल मैप हमको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाया है कि हमको कुछ रास्तों को याद करने की जरूरत नहीं है, उसके बेसिस पे वी आर एबल टू गो very easily. But what happens? Because there was a visualization capability which were being challenged once we were able to recall our all locations. जब हम लोग कभी travel करते थे. So in that case, our visualization capabilities, because of that reason, whatever the brain portions were getting activated are not being activated now. So in that case, there might be a requirement of cognitive training. There might be a requirement of meditation and music by which we can improve our cognitive abilities. And in case of technology, even video games, virtual reality, augmented reality, they are also being used for that particular reason. And in that case, अगर हम बात करें impact of meditation, for example, long term meditators के केस में जो हमने ब्रेन नेटवर्क्स पाए वो कंट्रोल की तुलना में बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड थे. या हम फिर वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी की बात करें जिसको हमने थीटा रिदम के एवोल्यूशन से निकाला, तो इन केस ऑफ मेडिटेटर्स वी फाउंड दैट देयर वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी वाज एक्चुअली रियली गुड. या ईसीजी के बेस पे इवोल्यूशन हमने पाया कि एलएफ बाय एचएफ रेशियोज, दैट मींस he was able to handle his stress level because of meditative practices. Yeah, heart rate variability was also reduced. The same way, video game पे जो चाहे 2D गेम्स या 3D गेम्स या फिर अल्टीमेट लेवल ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वी वर एबल टू इम्प्रूव द अटेंशन लेवल, वर्किंग मेमोरी लेवल, एंड इवन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एंड वी वर एबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल आल्सो. सो अब अगर हम रिसर्च की बात करें तो जैसे हम लोग अपने ट्रू सेल्फ में लेके हमारे रिसर्च क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक हु एम आई, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस आई एम मेकिंग, एंड what is there something more. So the same way हम लोग जब इन चीजों पे रिसर्च करते हैं तो what is my actual research question? Research question could be कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से लोग हैं. For example, they might be suffering from depression, they might be suffering from anxiety or attention deficit disorders, and उनके केस में हम किस तरीके से कौन कौन से मोड्स यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, वी आर यूजिंग ईजी, एंड ईजी में यूज करके जो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेंड्स निकाले उसको एनालाइज करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी आर यूजिंग, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स व्हिच वी आर यूटिलाइजिंग फॉर दैट. तो हमारी जो स्पार्क में रिसर्च चल रही है उसमें हम मेनली 3 टाइप के डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल डाटा, साइकोलॉजिकल डाटा, एंड वी आर यूजिंग कॉग्निटिव टेस्ट बैटरीज आल्सो. और इनके बेसिस पे निकालते हैं हम व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, and उसमें attention network index, whether we are able to control our stress levels, and because of controlling the stress levels we are able to improve our cognitive abilities. और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, like in case if somebody is able to handle his emotions much better, then also there is a good improvement in cognitive abilities, and finally his personality index is calculated. मैं लास्ट में समराइज करना चाहूंगा अपने प्रेजेंटेशन को 2 शब्दों से, कॉग्निटिव रेजिलियंस एंड कॉग्निटिव रेडीनेस. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया,
most of us, many of us are not even sometime aware that कि हमारे sensual pleasures कैसे हैं. तो अगर हम इमोशनल की बात करें और अचानक हमारे पास में एडवर्स इवेंट आती है, तो because our brain has been trained because of practicing meditation, then what happens? We are able to detect our emotions, we are able to regulate our emotions, and finally, because of regulations of emotions, we are able to manage our cognitive abilities in such a way so that cognitive resilience plays quite a positive role by adapting positive thoughts into that. Now, coming to the cognitive readiness, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेना चाहूंगा. For example, fighter pilot, he is cognitively resilient, but the cognitive abilities which he has got, he is able to utilize them at the right time when it is really required. It's called as a cognitive readiness. So by summarizing in short, that means because of shift in consciousness level, which is being trained whether due to meditation or because of the technological reasons, we are able to regulate our emotion and stress level, because of which our cognitive abilities get improved, and even in case of adverse situations we are able to perform which is required. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील चंद्र जी का उनके विचारों के लिए. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं. इस सत्र के कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ओलिविया गुसेरीज. ये एक रिसर्च एसोसिएट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं कोमा साइंस ग्रुप, गीगा कॉन्शियसनेस, सेंटर डू सर्वू, CHU हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लीज, बेल्जियम के. आइए सुनते हैं Dr. Olivia से. Today I will explain you what we do at the University of Liège at the Coma Science Group, and mostly working on consciousness research with patients who recover from coma. But then we also study consciousness through other modified state of consciousness that we will shortly go over today with you. So the first thing is what happened after a coma. So a coma can be due to a severe brain injury, that may be from a traumatic accident, but also from a stroke or from an anoxia, so a lack of oxygen in the brain. And if the brain lesions are very severe, the patient will fall into a coma. That means they will have no open eyes and no consciousness whatsoever. They will only show reflex behavior. So coma is a very acute state. It only lasts a few days up to a few weeks, and then after either the patient pass away or then they recover at least arousal or wakefulness, and so then they start to open the eyes, and but still they have no consciousness, so they only show reflex behavior. And so those patients used to be called vegetative states, but in Europe we emphasize another name, which is the unresponsive wakefulness syndrome. So those patients are awake, but they are not responsive. Then once the patient starts to show signs of consciousness, then they enter into what we call the minimally conscious states. And so the minimally conscious states can be divided in two subgroups, the minimally conscious state plus and minus, depending on the presence or absence of languages. So for example, patients with minimally conscious state minus, they can show visual pursuit or pain localization, but they will not show response to command. Minimally conscious patient plus will show response to command. And then once the patient starts to functionally communicate, then they emerge from the minimally conscious states. Another entity that we see more rarely is the locked-in syndrome. So that's patients who have a brainstem lesion that prevent any motor input and output, which means that they are fully paralyzed and yet fully conscious. So once we have all these different entities, it's very difficult sometimes to assess the level of consciousness at the bedside. And more specifically, as we will see in a few minutes,
we also see that patients who we think are unconscious at the bedside, if you do neuroimaging techniques or electroencephalography, you see that they have brain activity that is more compatible with consciousness. So it's very important to show that our research showed that the absence of proof is not a proof of absence. So what do we do when we see the patients at the bedside? Basically, there are three things that we are looking at. The first thing is arousal. Are they opening their eyes? Yes, no. Then that differentiates the coma from the unresponsive states. Then once we know they are awake, then we look at awareness. So non-reflex movement. Once we have seen that they do have some awareness, then we will find a way to communicate with them. Binary communication, for instance. And the most difficult is really to look at awareness. So what do we mean by awareness? So using the coma recovery scale revised, there are some items that are more prevalent to denote a minimally conscious state patient. And that's the one that we see here. So we have the movement to command, the visual fixation, visual pursuit, localization to pain stimulation, and automatic motor responses. So that's, for instance, if the patient starts scratching the nose or grabbing the tracheotomy, that's considered as a sign of consciousness. But then we also know now that we do more research that they may have other signs of consciousness that could be taken into account at the behavioral level. And here I listed a few of them. So for instance, the resistance to eye opening could be one. The fact that people can eat orally without any support. So that could also be considered as a sign of consciousness. Then perhaps the sound localization. So to be able to move the head when they hear a sound. Same for auditive habituation or to respond to olfaction or leg crossing. Or maybe even grimace in certain cases. But we have also shown that blinking to threat, for instance, is not considered as a sign of consciousness. So this is just to give you an idea of what we are looking at the cognitive behavior at the bedside to infer consciousness in someone where it's very difficult to communicate. And recently, we have done the European Academy of Neurology recommendation. So for anyone who works with patients who recover from coma, we have a few recommendations that I would like to share quickly with you today. The first thing is really to open the patient eyes, even if they cannot do it by themselves, because then you can ask to look up, for instance, and that can differentiate a patient who is in a locked-in syndrome. The second one is to use a mirror if you want to assess the visual pursuit, because more patients will follow their own look rather than a pen or a person in the room. And then to use the full outline of unresponsiveness in the intensive care instead of the Glasgow coma scale, because again, here you can look at the visual pursuit. And then the last two recommendation is to use the coma recovery scale revised and to use it repeatedly. So at least 5 times within 2 weeks if the patient is in a chronic state. And then recently we also developed a new scale, the second, the simplified evaluation of consciousness disorder, that is faster and easier to administer than the coma recovery scale revised. So if you want, we can also give you more information about this scale, and we have guidelines and a video to help the clinician for using this scale. But even with the best behavioral assessment, we still see that sometimes we are missing consciousness just looking at the response of patients. So it's very important to also use a neuroimaging technique. So that can be fMRI, PET scan, electroencephalography, and even magnetic stimulation combined with electroencephalography. And here, just to give you an example, we have 2 patients who came at the hospital. Both of them came with an unresponsive wakefulness syndrome. So both of them were considered unconscious at the bedside. We did all the behavioral assessment. Everything was the same for those patients, no consciousness. And yet,
when we did the multimodal assessment, so we look at the brain metabolism, we look at the fMRI resting state network, we look at the structure of the brain with the white matter track, and we look at if they could do a mental imagery task while they were in the fMRI scanner. And in one patient, we see that there was no activity whatsoever. And so for that patient, the diagnosis was confirmed by the neuroimaging. But then on the other case, we saw a completely different pattern where we saw that the brain metabolism was relatively high. There was a partially preserved resting state default mode network. The white matter track were also relatively preserved, and she could activate specific brain area when we ask her to, for instance, imagine playing tennis or imagine moving into her house. So in that case, the neuroimaging technique, they refute the diagnosis, the behavioral diagnosis that we saw at the bedside. And so for such patient, we have the term MCS star, so minimally conscious state star, or cognitive motor dissociation. And for this patient, then we really highlight the need of doing active treatment to involve her more into the rehabilitation processes, and so on and so forth. And then in parallel to our work with patients who have disorders of consciousness, we also work with patients who did recover from a coma and experience near-death experiences. So seeing the light, hearing voices, a feeling of well-being. So it's still a state that is very unknown, and we don't understand it very well, but we are studying this specific state in our laboratory. And in parallel, we also work on studying hypnosis, cognitive trends, meditation, lucid dreaming, and anesthesia, using, for instance, the isolated forearm technique. And so here I would like to show you two specific studies. One was in meditation. It's a single case study where we ask the expert meditator to do two kinds of meditation: open presence, and then SICO, so self-induced cognitive opacity. And then we also look at the brain activity when he was in a drowsy state and in a normal state. And what we have observed is that depending on what we were asking him to do as a meditation state, we saw very different brain activity and changes in his brain. And that was dependent on where we were stimulating with transcranial magnetic stimulation. And similarly, we have done the same with an expert in cognitive trance. So this person was trained in shamanic trance, and then she developed a specific self-induced cognitive trance. And we did the same. So we stimulate her brain, and then we look at the brain activity. And again, here we saw that when we were stimulating the front of her brain, all the metrics that we looked at were increasing. And when we were stimulating at the end or at the back of her brain, the brain metrics were decreasing. So we can see that in these states, a participant can really induce changes in their subjective experience, but also at the brain level. So I thank you very much for your attention, and I wish you a great day. ये थे हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर ओलिविया जी, जिन्होंने आज के इस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रकाश दिया। आप सभी की तरफ से डॉक्टर ओलिविया जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर वी.के. सरस्वत जी। ये ऑनरेबल मेंबर हैं नीति आयोग भारत सरकार के। आइए सुनते हैं उनके विचार। E-conference on expanding horizons, science, consciousness and spirituality. The topic consciousness and cognitive behavior is synergy, looks more like a psychological topic or neuroscience related topic. However, on closer examination, it looks very spiritual and closely connected with our daily routine life. For this, we should understand real meaning of spirituality. Since the beginning of 20th century, there has been an increasing focus on the spirituality and spiritual phenomena
in organizational development and society as a whole. Lately, this focus has shifted to modern workplace, championing the role of spirituality in improving organizations, markets, and economies, and subsequently all of the society. Contained in their discourse is the notion that spiritual individuals are ethical in business and hence are of significant benefit to an organization. Researchers have shown that spiritual individuals are more likely to demonstrate enhanced teamwork, greater kindness and fairness, increased awareness of other employees, increased honesty and trust within the organization, higher incidences of organizational citizenship behavior, and express more servant leader behavior. They are also more prone to perceive the ethical nature of business issues more clearly and are more sensitive to corporate and social performance. All this translates into an effective and efficient decision making in all walks of life, be it personal or professionals. There is a holistic model of spirituality and it influences various factors. What is spirituality? Spirituality is human desire to connect with transcendent being or ultimate reality. Its desire of integration of self with meaningful whole. Its quest for truth, wisdom, and not for attachment to a particular belief. Spirituality is connected to qualities like compassion, patience, tolerance, forgiveness, contentment, sense of responsibility, and harmony. Spirituality brings mental calm, awareness of eternal truth, helps us understand purpose of life. There are certain characteristics of spiritual individual, like they always seek to transcend their ego, their own self-interest. They have awareness and acceptance of their interconnectedness with others' creation and their ultimate concern. These individuals have understanding of the higher significance of their actions while seeking to integrate them holistically. They believe in something beyond the material universe which ultimately give value to else. A spiritual person stands outside himself and considers the meaning of his actions, the complexity of his motives, and impact he has on the world around himself. There is a value system which is related to spirituality. Spirituality promotes value system which acts as a regulating ideal for operations and decision making. We should also try to analyze how are these values generated. Control of ego promotes benevolence, respect for others, and altruism. Interconnectedness to ultimate others promotes trustworthiness and humility. Search for greater meaning in one's work promotes generativity, professionalism, industriousness, good organizational and citizen behavior. A spiritual person internalizes concept of correctness or excellence to adjust his motivation and behavior consistent with notion of spirituality. To count a few, the core values of spirituality are equality, honesty, compassion, avoiding harm, respect, peace, justice, forgiveness, service, duty, trustworthiness, being a good citizen, peace, and thankfulness. Now, how does spirituality translate into ethical behavior? That's an important point which we should dwell on. These values, when internalized by a spiritual person, guide all human decisions and when practiced consistently in different contexts become virtues. Value guide all human decisions, but a virtuous act is a special kind of act guided by moral values. According to some researchers, the moral virtues are responsible for developing a person's capacity for self-governance or self-contrite, and so helping them to overcome self-interest in their decision-making. Practical wisdom is the reward for striving for virtue. It is the ability to know what is good to do here and now. It is comparable to having sixth sense. It enables a person to have
rational control of their feelings, to have those feelings at the right times on the right ground towards the right people for the right motive and in the right way. It is clear that spirituality acts as a regulative ideal. The ideal generates an embedded network of specific moral values that represents an internalized disposition to act and be motivated and ways which address a spiritual individual's conception of what makes for excellence in terms of their roles and responsibilities in decision-making process. This regulative ideal provides a standard that affects the judgment and helps to govern moral choices made in the context of daily working practice. To put it alternatively, motivations, decisions, and actions that harmonize with a spiritual person's regulative ideal are appropriate and practiced, while those that clash with it are rejected. Now, how does the Indian philosophy introduce this part of the spirituality in terms of ethos? The Indian ethos center around conscious living and are rooted in the metaphysics of the spirit, that is single point reality with multiple manifestations of different shades. Conscious living means a moral and righteous living, namely a life not of zero desires but of regulated desires, a life whose hallmark are love, fellowship and sacrifice, and not that gives preference to society over personal gratification. Infinite pure spiritual energy with attendant features of supreme creative energy, intelligence, refulgence, and bliss, the cause of all creation and the essence of all life. Extension of spirit, whose divinity is not an actuality but a potentiality, a cross between dust and deity and God and brute. There are certain do's and don'ts which are related to moral and rational life. What are they? I would like to certainly mention a few of them, like respect human dignity and recognize man a man. Nothing human is alien. Do not isolate yourself from the life of the whole. Life is a trust for humanity. Satisfaction of personal desires is secondary. Do your best to make your small corner beautiful, efficient, and loving. Lead a life governed by the principle of dharma, that is righteousness, not a life of zero desires, but a life of regulated desires. Rein your lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, the 6 human weaknesses, otherwise the divine in you will be pushed back by the beast in you. Contemplation, control over senses, conscious decision making, think before you act, selfless action are some of the action points for leading a rational life. There is a new paradigm shift taking place in the whole scenario of development, which is called spirituality-based development. And what is that? In other words, development is a spiritual activity. It promotes our spiritual values such as love and generosity. It promotes sharing of material wealth. Therefore, it leads to equity. It gives higher priority to relationships than to material wealth. Life is full of love and accomplishing. People are contented and are not interested in seeking happiness in sensual pleasures. Therefore, people consume only to meet their basic survival needs. They are healthy. Development does not cause too much stress on natural environment. Hence, it is sustainable. The paradigm shift must encompass all aspects of the organization as though it is a living, breathing, organic entity that is influenced by its level of spiritual intelligence like each of its employees. Management must understand that spiritual intelligence seeks meaning, caring, wholeness, purpose, and being part of something greater. The spiritual intelligence paradigm must be integrated into the organization's vision and mission.
The paradigm must drive the organization towards heightened workplace spirituality and a culture that provides meaning to each employee. Managerial leadership must integrate the fruits, traits, and attributes of spiritual intelligence and include trust, honesty, caring, ethics, honor, and shared meaning. As the fruits of heightened spiritual intelligence are planted and begin to grow, they enable workplace spirituality to flourish, which positively impacts the organization culture. The cycle is self-feeding, as heightened levels of spiritual intelligence result in heightened workplace spirituality, which leads to a more positive and proactive culture. In conclusion, being self-aware is essential to master the working of your mind. When one is self-aware and in control of one's thoughts and emotions, he becomes empowered to create success holistically in life, thus bringing to him content and happiness in the truest form. I would like to quote that let us prevail peace on earth, heaven, space, universe, water, herbs, vegetation, gods and goddesses, and on peace itself that combines all the things for global good. An ideology from our Vedas. Hope we all follow that. Thank you very much. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वी के सरस्वत जी का उनके शुभकामनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए करते हैं हम एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस। और इस गाइडेड मेडिटेशन को हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी जी जुड़ रही हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसके कोर ग्रुप मेंबर हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए दीदी जी के साथ करते हैं मेडिटेशन एक्सपीरियंस। ओम शांति। अब अपने मन को थोड़े समय के लिए हम अपने भीतर के आंतरिक जगत की सैर कराएंगे, जहां हम स्वयं को रियलाइज करेंगे मैं कौन हूं, और स्वयं के साथ स्वयं के पिता परमात्मा पिता से मन और बुद्धि से मिलन बनाएंगे। आत्मा और परमात्मा का ये मधुर मिलन, जिसे ही राज योग कहा जाता है, जिसकी क्षण भर की अनुभूति भी स्वयं को शक्तियों से भर देती है। तो जैसे जैसे आपको श्रेष्ठ संकल्प देते जाए, आप उसी संकल्पों में अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते जाना, क्योंकि योग अर्थात ही मन के संकल्पों के द्वारा मिलन और राजयोग अर्थात प्रभु के साथ मिलन। तो चले इस अलौकिक यात्रा पर दिव्य अनुभूतियां करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दे। महसूस करें पैरों से लेकर मस्तक तक मेरे सारे अंग ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। फील करें पूरे बॉडी में एक अनोखा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। पूरा शरीर हल्का हो गया है। अब अपने मन को मस्तक के बीच में चमकते हुए सितारे पर एकाग्र करें। देखें
एक सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा है। ये सितारा मैं हूं, मेरा ओरिजिनल फॉर्म, point of light. I am a soul, point of energy. मैं आत्मा, शरीर की मालिक हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है। I am a peaceful soul. शांति की शक्ति अनुभव करें। मेरा मन शांत हो रहा है। मैं शरीर से डिटैच्ड, मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, शक्तिशाली हूं। ये मेरा इनर वर्ल्ड है, जहां सिर्फ मैं हूं। पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा उस सुप्रीम पावर परमात्मा की संतान हूं। मेरे पिता वो भी सुप्रीम लाइट, परम ज्योति है। अपने सामने ले आए उस पिता के सुंदर स्वरूप को। परम ज्योति मेरे सामने है। फील करें, विजुलाइज करें, जो शक्तियों के दाता है, जो सर्व गुणों के सागर है, शांति के सागर है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। उस पिता से शक्तियों की लाइट मेरी आत्मा में आ रही है। एक फाउंटेन की तरह प्रभु पिता की लाइट और माइट मुझ आत्मा में समा रही है। ये सुंदर मिलन ही प्रभु मिलन है। मैं आत्मा इस रूहानी मिलन में स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रही हूं। प्रभु पिता मेरे साथ है, मेरे पास है। इस मिलन का आनंद ले।
अब मैं आत्मा फिर से स्वयं को मस्तक के बीच में देख रही हूँ। पूरे शरीर को फील करें। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई हूँ। पूरी डिवाइन एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल चुकी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहकर मुझे कर्म क्षेत्र पर कर्म करने हैं, लेकिन याद रहे मैं आत्मा ये शरीर से कर्म कर रही हूँ। शिव पिता डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है। मैं शक्तिशाली बन गई हूँ। फिर से बाह्य दुनिया में आए और स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी नेहा दीदी जी का, जिन्होंने हम सबको बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया। आशा करते हैं कि आप सबको भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अभी अभी जो हमने मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया, ये हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझाता है कि हम अपने मन को कैसे काबू में रख सकते हैं, हमारे विचार कैसे चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। गहराई से अगर हम मेडिटेशन को एक्सपेरिमेंट करके देखें तो उसके अनुभव हमारे सामने खुद ब खुद नजर आते हैं। अब हम आपके सामने एक टेक्निकल सेशन लेकर आए हैं। आने वाले इस 1 घंटे से भी अधिक समय में हम कुछ टेक्निकलिटीज पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस है, तो रिसर्चर्स के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो बिना प्रूफ के कुछ नहीं मानते। राजयोग मेडिटेशन के ऊपर भी अनेकों रिसर्च हुए हैं और उसके रिसर्च फाइंडिंग्स को भी हम यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इस सत्र में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ेंगे जिन्होंने मेडिटेशन पर रिसर्च किया है। हमारे पहले वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर कमलेश झा जी जुड़ रहे हैं, जो एडिशनल प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स पटना के। आइए सुनते हैं डॉक्टर कमलेश झा जी से। After becoming a physiologist, I developed some interest in this science of yoga and meditation. And recently I have chosen to work in the field of effect of meditation in anxiety spectrum disorder. This anxiety spectrum disorder is one of the commonest disorder which is being perceived, or people are suffering from it at every place across the world. So most of us has at some point of time suffered a bit of anxiety. When it becomes excess, it becomes a problem, and if it in a very intense form, it is also called panic disorder, to make it simple. So why this yoga and meditation? This is existing since eternity. Since this earth is existing, this science of yoga and meditation is existing. The only difference is we have not accepted it as a science earlier. So it was in practice. They were yogis and they used to practice it, and what we call Swanta Sukhai. So it was a Swanta Sukhai practice. But now as the science developed, we tried to link these two things together, the scientific aspect and the what we call documentation of the benefits. So when we started working in the science of meditation, we felt that actually it has got a lot of benefit. So since last 1.5 years, I am working with the Rajyoga people,
from Brahma Kumaris, and we got a project that is being given funding by the Government of India, Department of Science and Technology. So although the result is yet to be analyzed completely, and we are still recruiting patients, so it is not correct to share the details of the outcome, but in short I can tell you the results are very encouraging. And so basically why this Rajyoga meditation, why I have chosen Rajyoga meditation? If we as much as I know about Rajyoga meditation, basically when we talk about complete meditation, it is something called Ashtanga Yoga. So and it has got 8 components: the yam, niyam, asan, pranayam, dharana, dhyan, samadhi, pratyahar, including pratyahar. So there are 8 parts. So when everything is in appropriate proportion, we call it complete meditation. The Raj Yoga, especially the one that is being practiced by the Brahma Kumaris, has got almost all component in appropriate proportion. That is why I consider it Raj Yoga or complete yoga. So if I talk little bit science about the science of this meditation, how it actually works in our body and our brain. So basically, we all know we have got a sympathetic nervous system, a system that is, autonomic nervous system. So this autonomic nervous system is composed of 2 systems: the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. This sympathetic nervous system prepares us for fight and flight response, whereas the parasympathetic response is a system of pleasure. When we are comfortable, when we are peaceful, then this parasympathetic nervous system is active. Usually, in every situation, both the systems are active, and it creates a perfect balance. When we require a quick response, a fight and flight response, then sympathetic nervous system takes upper hand. When we are comfortable, peaceful, then parasympathetic system dominates. So problem occurs when there is imbalance. So when we need to be peaceful, but we are more anxious, our sympathetic nervous system is dominating, then there is a problem. So now what happens? Whatever disease condition is there, it has got some alteration in this balance. So you name a disorder, and there is a imbalance between the 2 systems. In other words, we can tell that basically it is the imbalance of this sympathovagal system that is responsible for the disease process. And we also know the highest center for this this autonomic nervous system is our brain. Its name itself implies autonomic nervous system means autonomous. So it has got its own control, and it is not in our voluntary control. But yes, by our voluntary activity, we can control our brain, and our brain can control this whole system. So the idea is very simple. By our own activities, our thoughts, our behavior, we basically control our autonomic nervous system, and now that system takes hold of the situation and keeps our body comfortable, our body disease free, and our mind peaceful. So this is the simplest explanation of how this meditation works. There are very good scientists in this field, and a lot of work is going across the world. So I'm not going in detail of the processes, how the system works, or how the neurotransmitters in the brain get modulated, or the DMN activity, default mode network activity, get modulated, or how the individual brain centers respond to it, or the neuroplasticity that is being said that this yoga and meditation has got a powerful impact upon the neuroplasticity. So all these things, I'm a very beginner in this field, so I'm not the authority to discuss all those things. But yes, in one words, this meditation is a perfect science,
and it need to be researched and need to be brought in the general public's domain to be practiced more and more. And I'm very thankful to the whole organization, the Brahmakumari organization. I have one co-PI also from that organization, and although I know about Brahmakumari since my childhood, but they are working. Even I visited Madhuban quite a few times earlier, but the depth of their work, the depth of their meditation, their dedication, and the purity of the work, and that is really commendable. And I'm very thankful that they are spreading this light of peace across the world. Thank you. दोस्तों, ये थे डॉक्टर कमलेश झा जी, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना से हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने हमें बताया कि मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट्स जो राजयोग पर रिसर्च हुए हैं उनके बारे में अपने विचार। हमारे अगले वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी एकता जी जुड़ रही हैं, जो एक रिसर्चर हैं और फैकल्टी हैं ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क विंग की। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। ओम शांति। आज हम जानेंगे जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्पार्क विंग के अंडर में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर हॉस्पिटल में किया गया। उसका टॉपिक था इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ऑन साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल आउटकम्स इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। इसके अंदर हमने पेशेंट्स के और उनके केयर गिवर्स के साइकोलॉजिकल आउटकम्स को देखा और पेशेंट्स के फंक्शनल आउटकम्स को भी हमने ऑब्जर्व किया। जैसा कि सब जानते हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। As Einstein said, everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of universe, a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which our modest powers must feel humble. And Dalai Lama also said, with the ever-growing impact of science on our lives, and religion and spirituality have a greater role to play in reminding us of our humanity. So, the background about this research is, as everyone knows, that spinal cord injury patients and their caregivers have been seen to suffer physically, mentally, emotionally, socially, and financially, because on everyday basis they have a lot of needs which has to be covered by financially, and it's a long life disability, either patient confined to the wheelchair or the bed. So therefore their suffering is too much. So earlier research has shown that negative emotional reactions are inevitable consequences following SCI, means spinal cord injury. Like Kennedy and Rogers have done this research in 2000. We can see that technology and modern medicine may support to control further physical decay, but the religious and spiritual belief practices help to prevent illness, recovery from surgery, reducing mental illness, and coping with the same. So keeping in view all these studies things, we have done this research whether the Rajyoga meditation is effective on these patients and their caregivers. It can help them to recover from their mental, emotional, social, and physical impacts. So some studies which has been done on the meditation, which shows that spiritual mindedness and health is very good relation, a positive relationship carrying. So some studies which has been done on the mindfulness meditation, that can be done by Coxozia, Shapiro et al., Brown and Major. So many research has been done on that. So what is Rajyoga as an intervention? Why we have chosen them? Because Rajyoga basically have the 4 limbs, and if we apply it in our life, that can be worked out in a positive outcome. So keeping in view that, we have tried to give that. So we frame the study in 4 bases on the 4 limbs of Rajyoga. First is wisdom, that is Gyan. So when we
apply the knowledge in our practical life that become our wisdom. So what is wisdom? That we believe that peace and positive are our original nature. But when we experience this knowledge in our practical life, it becomes really our power. So that is wisdom. So our Rajyoga meditation shows that the original nature is improving our health. So the peace and positivity as our original nature, pain, suffering and all negative emotions are acquired. So due to ignorance of our original nature. When we understood this concept, we become visionary and we try to imbibe the positive thoughts. So second thing, like everything is in this universe, whether it is a materialistic thing or non-material like soul, passes through the three stages, that is Sato, Rajo and Tamo. Means they are into their original form, there is some mixing, and once they are in their deteriorating stages, that is called Tamo. So the feeling of negativity is giving a negative impact, which is a Tamo stage. But when we understood our original nature and we create the positivity, we are recreating our Sato stage. Second important aspect is remembrance. Usually the yoga means we believe that Hatha Yoga or Ashtanga Yoga, but the yoga means remembrance, where we get all this positivity, the originality, the peace, happiness, love, which is the nature of a human being. Why we all believe in the same? Because this is our original nature. So the concept of self-respect, like I being myself, I have to love myself first because I am a loveful being. I am a powerful being because power is also my original nature. I myself is a peaceful being. And when we remain in that consciousness, we do the self-talk. So this has become our self-respect and it enhances our self-esteem. Third is the virtues. Our original virtues, knowledge, peace, love, purity, happiness, bliss and powers. So when we connect with the supreme power, that divine connection inculcates the virtues within. Because he is the ocean of everything. And the service to have good wishes and good feelings for the self and for the others. So every time जिसको हम कहते हैं दुआएं देना. So that is the seva part. So these are the four aspects of the Raj Yoga which we have covered. We have experimented with the patient. So the objective of this study is to explore the application of Raj Yoga with the conventional treatment to strengthen the patient and caregiver as an individual in a holistic way. So the primary objective to see the outcome of Raj Yoga meditation on psychological and functional basis on the patient, and the secondary to see the effects of Raj Yoga in the pain in SCI population and psychological outcomes in family members and caregivers. As the SCI is a lifelong disability condition, so we hypothesize that Raj Yoga meditation would have a psychological impact on the person with SCI, thus affecting the family. And this will result in functional improvement of the affected person. So these are the few previous studies which has been shown the relationship between spirituality and health and the religion. And they all said like they shows the positive impact on the health. So now we'll discuss the methods of the study. The study design, this is a pre-post non-randomized controlled trial with two groups at single tertiary care center, which is well-known center, Indian Spinal Injury Center, New Delhi, India. So there are two groups, one is intervention, one is the control. The intervention group, like patient with conventional rehabilitation along with Raj Yoga meditation, and the control group, patients with only conventional rehabilitation. The caregivers were also clustered in same group as
that of their respective patients. Study duration, so recruitment phase was 16 months and the intervention duration is 1 month follow-up. The study population, 100 SCI patients and 100 caregivers, 50 in each groups. Inclusion criteria, 16 to 60 years, undergoing rehabilitation at ISIC, able to comply with study procedures, signed the informed consent document. And exclusive, not able to sit continuously for at least 45 minutes, expected to be discharged from rehabilitation in less than 1 month, having some other neurological disorders or some other psychological conditions or some diseases, or they are involved in any other clinical trial for 3 months. The methods like Rajyoga meditation, this group therapy we have involved one-to-one basis for 45 minutes daily, 6 days in a week for a month to the intervention group. And meditation practice was done for 20 minutes through a guided commentary and Brahma Kumari's spiritual knowledge for 25 minutes. Subjects trained to do 20 minutes daily self-practice of Rajyoga meditation in the morning through same guided commentary, and standard protocol for all admitted person with SCI and ISIC include the services of department and its offshoots including physiotherapy, occupational therapy, vocational counseling, psychological services, peer counseling, social work services, assistive technology, etc. The analysis, we have used non-parametric test as well as t-test and ANOVA. Level of significance was p-value is less than 0.05. These are the assessment tools: perceived stress scale, numeric pain rating, WHO quality of life breath, spinal cord independence measure for functional outcomes, and hospital anxiety and depression score for the psychological. So the results of this study was very significant outcome we have observed between the control arm and the intervention arm. The perceived stress scale numeric pain rating is completely reduced. The p-value is less than 0.05. Quality of life is significantly improved between both the arms. And even the caregivers also, the perceived stress scale, hospital anxiety and depression score is significantly decreased between intervention and control arm. So these are the table. You can see the results like perceived stress scale, hospital anxiety and depression score, numerical pain rating significantly reduced, quality of life is significantly improved, spinal cord independence measure is also improved. So these are the covariance of the pre-post comparison between intervention and the control arm. This table is showing we have done subgroup analysis between paraplegic and tetraplegic. Paraplasia means the SCI patients, those have only lower limb paralysis, their upper limbs have some improvements, means it's working in a normal way. And tetraplegic, where all 4 limbs are not giving a proper response. So we have seen in both the groups also their perceived stress scale, heads and numeric pain rating significantly decreased, and quality of life and skin is significantly improved. We have done subgroup analysis between the acute and the chronic patient. Acute patients we have considered, those are admitted into 6 months, and more than 6 months patient we have included in the chronic criteria. And again the same results we have observed.
p-value is less than 0.05 for PSS, heads and numeric pain rating, then skim and quality of life is significantly improved. So unlike the previous studies which reported positive results based only on physiological and psychological parameters, but this present study also shown that functional parameters with psychological ones and showed significant result. So literature also support to our psychological observation, PSS, heads, quality of life, and functional observation, numerical pain rating and skim for SCI population. So there are few references which we have been mentioned here. Subgroup analysis also performed on two different parameters, paraplasia versus tetraplegic and acute versus chronic. So we observed also positive correlation between patients and caregivers in terms of reduction of stress, depression and anxiety. When patient is reducing that, then their caregivers also have the significant improvement in the stress, depression and anxiety. So the conclusion of the study was 1 month add-on easy Rajyoga improved psychological and functional outcomes in patient with SCI. Further studies with robust design are needed to validate the results. So we have the future plan, a subsequent clinical study to observe pre-post brain pattern through EEG and fMRI with Rajyoga meditation intervention. The limitation of study was the availability of subject based on their interest and feasibility of meditation. So I must thank to the Almighty Authority who enabled us to serve towards humanity with great vigor and zeal. Research, rehabilitation and psychological team of Indian Spinal Injury Center, SpARC Wing of Rajyoga, Education and Research Foundation of Brahma Kumaris, patient and caregivers, those participate in this study. Thank you so much. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी एकता जी का, जिन्होंने अपने विचार आज के सत्र में रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कनिष्क शर्मा जी, एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं आज के विषय पर उनके विचार। ब्रह्म कुमारी राजयोगा की अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको हम ईईजी और ईसीजी और इस तरह के अलग अलग फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स के माध्यम से हम उनको देखते हैं। पिछले कई सालों में बहुत सारे रिसर्च, बहुत छोटे छोटे रिसर्च एनालिसिस हमने किए हैं राजयोगी भाई बहनों पर, उनका डेटा रिकॉर्ड किया है और उनका डेटा रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालाइज किया है हमने और पाया कि बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस उनके ब्रेन में, उनके बिहेवियर में होते हैं। तो इन सारे चेंजेस का एक सार जो है वो अगले 10 मिनट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरे विश्व भर में अलग अलग तरह के मेडिटेशन पर शोध हुए हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, विपासना, सुदर्शन क्रिया योगा, हिमालयन योगा, इस तरह के कई सारे मेडिटेशन पर शोध हुए हैं, पर राजयोगा पर शोध बहुत कम हुए। और राजयोगा पर शोध कम होने की वजह से साइंटिफिकली वैलिडेशन जो जितना अच्छे से मिलना चाहिए था राजयोगा मेडिटेशन को, उतना नहीं मिल पाया। हमने एक कोशिश की कि हम राजयोगा मेडिटेशन को स्टडी करें और उनके जो भाई बहने उनके इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी डेटा है उसको हम रिकॉर्ड करें और उस डेटा को रिकॉर्ड करके हम उसको एनालाइज करके देखें कि वास्तव में राजयोगा का अभ्यास करते समय और करने पर, लंबे समय तक करने पर क्या क्या ब्रेन में चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस को जब हमने देखने के लिए बहुत इनिशियल प्रोटोकॉल, जो सबसे पहले प्रोटोकॉल से जो हमने डिजाइन करे, उसमें हमने कई सारे भाइयों बहनों का हमने ईईजी डेटा रिकॉर्ड किया। उसमें से कुछ डेटा को लेके हमने एनालाइज किया और उस एनालिसिस से हमको जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में लिखा है मेडिटेशन इंक्रीजिंग अल्फा और थीटा स्टेट ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि अल्फा और थीटा स्टेट है क्या। तो अल्फा और थीटा स्टेट ब्रेन का जब हम बोलते हैं तो ये बहुत रिलैक्स्ड और बहुत कामिंग स्टेट्स जो होती हैं, ये उस तरह की ब्रेन स्टेट्स होती हैं। अल्फा और थीटा जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी का जो पैरामीटर होता है वो अल्फा का 8 से 13 हर्ट्ज तक रहता है और थीटा का जो रहता है वो रहता है लगभग 4 से 7 हर्ट्ज तक।
तो जब इन अल्फा और थीटा स्टेट्स को हमने ईईजी में देखा एनालाइज करके, तो हमको लगा कि मेडिटेशन करने से अल्फा ईईजी सिमेट्री और अल्फा ईईजी पावर, इन दोनों में चेंजेस होते हैं। अल्फा पावर में क्या चेंजेस होते हैं? अल्फा पावर बढ़ती है। अल्फा पावर बढ़ने से अल्फा का जो स्टेट है वो लंबे समय तक बना रहता है, यानी कि जो भाई और बहन ध्यान करते हैं उनके ब्रेन में अल्फा स्टेट ड्यूरिंग मेडिटेशन और इवन जब वो मेडिटेशन ध्यान नहीं कर रहे होते हैं तभी भी कई कई समय तक अल्फा स्टेट उनके में रहती है। इसके अलावा जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं हेमिस्फेरिकल एसिमेट्री, तो हेमिस्फेरिकल एसिमेट्री एक इंडेक्स हमने डिजाइन किया जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेन का जो फंक्शनल एक्टिवेशन है वो लेफ्ट साइड पर जाता है या राइट साइड पर जाता है। तो जैसे हमने देखा तो इसमें हमने पता लगाया कि जब हायर स्कोर्स रहते हैं, जब स्कोर्स ज्यादा होता है तो रिलेटिव लेफ्ट साइड एक्टिवेशन रहता है। और लेफ्ट साइड एक्टिवेशन हमने देखा कि कई अलग अलग एरियाज में, स्पेशली लेटरल फ्रंटल, मीडियल फ्रंटल और एंटीरियर फ्रंटल और पैराइटल, इन 4 एरियाज में ब्रेन के, जो कि अगर हम एंटीरियर फ्रंटल बोलेंगे तो लगभग ये जो एरिया है पूरा, ये पूरे एरिया में, लेटरल फ्रंटल लगभग ये दोनों एरियाज जो है, जो इसको हम लेके चलेंगे लेटरल फ्रंटल एरिया। इसके अलावा पैराइटल एरिया जो कि हमारा इस स्ट्रिप में होता है, जिसका काम अटेंशन रेगुलेट करना होता है, इस एरिया में भी हमने देखा। तो बहुत अच्छे से हमको एसिमेट्री हमको मिली, हेमिस्फेरिकल एसिमेट्री मिली। और जो आउटकम है ये सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव इमोशन सर्किटरी और अटेंशन का जो फंक्शनैलिटी है वो वेलबींग के साथ किस तरह से एसोसिएट होता है, इसको हम देख पाए हैं। तो जब हमने ईईजी डेटा को क्वांटिफाई करा, उसके साथ में हमने कई भाई बहनों को एक टास्क भी कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के लिए दिया। एक तरह से ये गेम था जो 10 से 11 मिनट का एक गेम था, जिसमें उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ना था और ये 10-11 मिनट के टास्क को कंप्लीट करना था। इस टास्क को हम नाम देते हैं अटेंशन नेटवर्क टेस्ट। तो जब अटेंशन नेटवर्क टेस्ट को हमने कई मेडिटेटर्स में और नॉर्मल कंट्रोल सब्जेक्ट्स में, जो कि नॉन मेडिटेटर्स थे, उनमें हमने देखा, तो हमने पाया जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ओवरऑल एक्यूरेसी जो थी वो बहुत हाई थी लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में। जो भाई बहने राजयोगा का अभ्यास करते हैं उनमें सिग्निफिकेंट लेवल पर हमको एक्यूरेसी उस टास्क में बहुत अच्छी मिली एज कंपेयर टू कंट्रोल सब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन मेडिटेटर्स। दूसरा जो हमारा इंडेक्स था वो था रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिली सेकेंड्स में, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में मैक्सिमम रिएक्शन टाइम जो था वो कंट्रोल की अपेक्षा में फास्ट था। जैसा कि देख रहे हैं जो बार है, ब्लू कलर का बार है, वो नीचे है, और वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का बार है। जो ऑरेंज कलर का बार है वो कंट्रोल सब्जेक्ट्स का बार है, यानी कि नॉन मेडिटेटर्स का बार है, जो कि उससे ऊपर है। तो देखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शन टाइम जो है वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का बहुत प्रिजर्व्ड है, यानी कि एक अच्छे लेवल तक उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज दिया। एफिशिएंसी एक तीसरा इंडेक्स है जिसमें हमने अटेंशन के 3 इंडेक्स, अलर्टनेस, कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग और इसके अलावा ओरिएंटिंग, इन 3 इंडेक्स को हमने जब स्टडी किया तो हमने देखा कि अलर्टनेस का और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखना चाहें तो हम कहेंगे जजमेंट की क्षमता से, जज करने की क्षमता से, और कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर पे। तो जब इस तरह की क्षमता को हमने देखा तो हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि एफिशिएंसी कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग और अलर्टनेस की बढ़ी है मेडिटेशन करने से। तो वी कैन से दैट मेडिटेशन कैन इम्प्रूव अटेंशन नेटवर्क्स आल्सो। इसके अलावा इस ईईजी डेटा पर हमने और अलग अलग तरह के एनालिसिस करने का प्रयास किया। एक एनालिसिस जो हमने किया वो हमारा फोकस था एंट्रोपी को लेकर। एंट्रोपी एक ऐसा मेजर है जो कि ब्रेन के कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। कॉम्प्लेक्सिटी को और अगर हम सरल भाषा में देखें तो कहेंगे कि ब्रेन में जितना जितना हम लर्न करते हैं उतना ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जितना ज्यादा अच्छा हम सीखते हैं, जितना ज्यादा सोचते हैं, जितना ज्यादा सोचने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से हो सकता है, बट पॉजिटिव सोचने से, कंस्ट्रक्टिव सोचने से जो हमारे ब्रेन के नेटवर्क्स हैं, जो ब्रेन के कनेक्शंस हैं, वो बढ़ते हैं। तो इस तरह के ब्रेन नेटवर्क्स, इन कनेक्शंस को बढ़ने की हाइपोथेसिस लेते हुए हमने एंट्रोपी को स्टडी किया और हमने पाया कि गामा एंट्रोपी जो है
वो मेडिटेटर्स के ब्रेन में बढ़ी हुई थी जिस समय पर वो मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे। अब ये जो मेडिटेशन का अभ्यास करने से गामा एंट्रोपी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, उसको हमने कोरिलेट करने की कोशिश करी। कई ऐसे लोग जिस मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं तो एक रिचनेस ऑफ कंटेंट रहता है। कह सकते हैं कि जब बाबा से मिलन की अवस्था होती है या फिर कोई भी ऐसा ये हो सकता है वो विश्व को प्रकाश दे रहे हो, इस तरह की जो भी अवस्थाएं होती हैं, तो उस अवस्था में बहुत सारा थॉट, बहुत सारा रिच कंटेंट वहां पर रहता है, जिसको कि हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग मेडिटेशन रिचनेस ऑफ कंटेंट रहती है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट रहता है, और एक फिनोमेनोलॉजिकल रिच स्टेट जिसको कि हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन को की अवस्था को रेस्टिंग स्टेट की अवस्था से किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से अलग करके हम देख सकते हैं। इसको करने के लिए हमने गामा एंट्रोपी का एनालिसिस किया। इसके साथ में गामा एंट्रोपी को कई लोगों ने रिलेट किया है यूफोरिक स्टेट से। यूफोरिक स्टेट और ज्यादा अगर अच्छे से समझे तो इसको कई लोग किसी तरह के ड्रग लेकर, किसी तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस लेके एक नशे की अवस्था में आते हैं, और वो नशे की अवस्था कई समय तक करने के बाद उनको एक लत लगती है। पर वो जिस नशे की अवस्था में आते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो बार बार उस नशे का सेवन करते हैं। तो वो अवस्था क्या है? वो अवस्था जो है वो यूफोरिक स्टेट होती है, और जिसमें कि एक अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि बिना किसी नशे की लत का शिकार हुए, बिना किसी ड्रग्स को कंज्यूम करते हुए भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं रेगुलरली, तो हम उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कोरिलेशन हम यहाँ पे देखने की कोशिश की थी, और इस तरह से हमने गामा एंट्रोपी को रिलेट करने की कोशिश की कि किस तरह से गामा एंट्रोपी रिचनेस ऑफ कंटेंट, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और मेडिटेशन की जो स्टेट है उसको सेग्रीगेट करके बता सकती है नॉर्मल कंट्रोल अवस्था में, जिस समय पर ध्यान नहीं कर रहे हो। लास्ट स्लाइड्स में आपने देखा कि ईईजी डेटा को जब हमने एनालाइज करके देखा तो हमने अलग अलग तरह के कंक्लूजन्स निकाले, अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स हमारी थी। इसके अलावा एक दूसरी तरह का डेटा भी हमने रिकॉर्ड किया, जिसको हमने एमआरआई स्कैनर के अंदर रिकॉर्ड किया। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो ऊपर एक रिंग बना हुआ है, तो ये रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक बेड होता है, जिसके अंदर जो हमारे भाई बहन थे जिनको अभ्यास करना आता था, राजयोगा का अभ्यास करना आता था, ऐसे कई भाई बहनों को जिनका अनुभव भी बहुत अच्छा था, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव था, ऐसे भाई बहनों को हमने उनको लेटने के लिए इसके अंदर रिक्वेस्ट किया। तो ये मशीन जो है, इसका काम क्या है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का डेटा एक्वायर करती है, और इसी के अंदर हमने एक स्पेशल डेटा रिकॉर्ड किया जिसको हम डीटीआई कहते हैं, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। तो ये जो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग का डेटा था, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, या फिर कई सारे बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, कई 100 हजारों न्यूरॉन्स जो एक जगह पर रहते हैं, वो दूसरी जगह के न्यूरॉन से किस तरह से कनेक्शंस बनाते हैं। इसको देखने के लिए हमने डीटीआई का स्टडी किया, और जो एक बहुत रोचक हमको फाइंडिंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हमको दिखाई पड़ी, वो थी कि ब्रेन में जो एक कह सकते हैं, ब्रेन में जब लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए एक रीजन होता है, एक कह सकते हैं एक ब्रिज होता है, जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम में हमको बहुत अच्छी फाइंडिंग्स हमको मिली। हमको इंक्रीज फंक्शनल अनाइसोट्रोपी और मीन डिफ्यूजिविटी डिक्रीज मिली। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक पाइप से आपको सिंचाई करनी है, और सिंचाई करने के लिए उस पाइप में जो फ्लो है, उस पाइप में उस फ्लो कितना ज्यादा तेज होगा, ये कितना पानी उस पाइप से निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पाइप में फ्लो कितना तेज है, और दूसरा उस पाइप में कहीं छेद तो नहीं है। अगर उसमें छेद होंगे तो कई जगह से पानी निकलेगा और पानी का प्रेशर कम होगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी पहुंचाने के लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से अब उस पानी की जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को समझिए। जब ब्रेन में राइट से लेफ्ट ब्रेन या फिर लेफ्ट से राइट ब्रेन की तरफ जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना होता है,
तो उस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए ये जरूरी होता है कि डिफ्यूजिविटी कम हो और एनाइसोट्रोपी ज्यादा हो। इससे हम पता लगा पाए कि एनाइसोट्रोपी ज्यादा होने से और डिफ्यूजन कम होने से हमको हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि लेफ्ट और राइट ब्रेन की जो सिंक्रोनी थी और वो एक दूसरे से जो उनका जुड़ाव था जो कि एनाटॉमिकल लेवल पर भी हमने एस्टेब्लिश किया। तो इस तरह की फाइंडिंग बहुत अच्छी थी और इसमें इस स्टडी में लगभग 22 लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स को हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इसके लिए वॉलंटियर किया और हमने एमआरआई स्कैनर में इस डेटा को रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें कि लेफ्ट और राइट ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं या लेफ्ट और राइट ब्रेन के जो बीच में ब्रिज होता है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके स्ट्रांग होने से कनेक्टिविटी जो है दोनों हेमिस्फेयर्स की वो स्ट्रांग होती है और इमोशन, अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और किसी भी तरह के कॉग्निटिव फंक्शंस का जो एक तरह से रेगुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए आप कोई टास्क करते हैं जिसमें लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है और राइट ब्रेन कम एक्टिव है, तो राइट और लेफ्ट ब्रेन की सिंक्रोनी बनाने के लिए उसका जो ब्रिजिंग है वो बहुत जरूरी होता है। तो कई सारे टास्क में जिसमें इन दोनों हेमिस्फीयर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, वहां पर ये जरूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वो ज्यादा सुचारू रूप से चले। और हमने देखा कि मेडिटेटर्स के ब्रेन में राइट और लेफ्ट ब्रेन के जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू नॉन मेडिटेटर्स। इसी स्कैनर से जो हमने एक डेटा कलेक्ट किया जिसको हम एफएमआरआई डेटा बोलते हैं, जिसमें एफएमआरआई का जो शाब्दिक अर्थ है वो है फंक्शनल एमआरआई। तो फंक्शनल एमआरआई का जब हमने डेटा रिकॉर्ड किया, जिस समय पर हमने जो हमारे राजयोगी थे भाई बहन, उनको हमने बोला कि आपको ध्यान करना है और कई स्टेट्स में आपको एक स्टेट में आपको ध्यान करना है, एक स्टेट में आपको ध्यान नहीं करना है। तो जब हमने उनका डेटा जिस समय उन्होंने ध्यान नहीं किया उस समय का डेटा हमने कंपेयर किया जब नॉन मेडिटेटर्स के डेटा से, जिस समय उन्होंने भी ध्यान नहीं किया था, उन्होंने किसी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की थी, तो हमने पाया कि ब्रेन में कई सारे पोर्शन हैं जो कि एक्टिवेट हो रहे थे नॉन मेडिटेटर्स के ब्रेन में, और केवल एक रीजन था जो कि मेडिटेटर्स के ब्रेन में एक्टिव, एक नेटवर्क था जो कि मेडिटेटर्स के ब्रेन में एक्टिव हो रहा था। तो ये जो 3 रीजन थे जो कि नॉन मेडिटेटर्स के ब्रेन में एक्टिव हो रहे थे, वो ऐसे रीजन थे जो कि सिग्निफिकेंट एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे। मान लीजिए जैसे लिटरल विजुअल है, पोस्टीरियर डीएमएन है, इसके अलावा सेंसरी मोटर नेटवर्क है। तो इन सारे नेटवर्क का काम जब आप लेटे हैं किसी रेस्टिंग स्टेट में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसरी मोटर नेटवर्क का काम क्या होता है, जिस समय कि आपको कोई सेंसरी मोटर कमांड मिल रही होती है उसको फॉलो करना और उसके बेसिस पे हमारे हाथ को, पैरों को और बॉडी को मोटर मूवमेंट्स के लिए उसके लिए संचालित करना। जिस समय आप लेटे हैं उस समय पर ऐसी कोई अवस्था नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी नॉन मेडिटेटर्स में ये जो नेटवर्क थे वो एक्टिवेट पाए गए। तो अब देखते हैं कि मेडिटेशन करने से जिस समय आप ध्यान नहीं भी कर रहे होते हैं बैठ के, उस समय पर भी जो मेडिटेशन से जो ब्रेन एक्टिवेशन होता है, या नॉन मेडिटेटर्स में जो ब्रेन एक्टिवेशन हो रहा होता है उस वजह से वो अगर उसको हमने कंपेयर करके देखा तो हमने देखा कि नॉन मेडिटेटर्स का ब्रेन एक्टिवेशन बहुत ज्यादा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस, और इसके कई जगह पर परिणाम देख सकते हैं कि जिस समय पे हम बहुत लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, बहुत आलस महसूस कर रहे हैं और इस तरह की अवस्था हम महसूस कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हम मेडिटेशन करके एक स्फूर्ति, ताजगी हमको मिल सकती है। तो ओवरऑल राजयोगा मेडिटेशन करने से जो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, जो कि बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे कई सारे चेंजेस को हमने देखा। उनको जब हमने ईईजी और एफएमआरआई और डीटीआई इस तरह का जो डेटा था उसको हमने एवेल्युएट करके देखा, तो हमने पाया कि अलग अलग लेवल पर राजयोगा मेडिटेशन इम्पैक्ट करता है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन फंक्शनिंग को, ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी को और साथ में बिहेवियर को भी। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन आर पॉजिटिव माइंड का इनकलकेशन एक होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जैसा कि हमने डीटीआई में देखा, और ये एनाटॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हाइपोथेटिकली, ये एक्चुअली ऐसे कनेक्शंस बनते हैं उसके बीच में, और कॉर्पस कैलोसम में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है।
इनर ओरिएंटेशन यानी कि अंतर्मुखी होने का एक जो भाव है वो मेडिटेशन करने से, इस मेडिटेशन का अभ्यास करने से बढ़ता है। मेडिटेशन एक एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस है जिसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट होने की वजह से जिस समय पे भी हम थकान महसूस कर रहे हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पर है जहां पर मान लीजिए सियाचिन जैसी एक जगह है जहां पर हमारे जवान रहते हैं, तो क्या ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन है कि क्या हमारे जवान अगर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे उधर तो क्या उनकी एनर्जी प्रिजर्वेशन हो सकता है वहां पर, क्या वो अपना एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्लो रख सकते हैं वहां पर? ये एक रिसर्च क्वेश्चन है जिसको हम शायद हो सकता है फ्यूचर में कभी उस पर देखें। अटेंशन के जो इंडेक्स हैं वो बढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे से अटेंशन रेगुलेट होता है मेडिटेटर्स में। और कह सकते हैं एक ऑन अ वेरी लाइट नोट कि जो लोग ड्रग्स को प्रमोट करते हैं यूफोरिक फीलिंग के लिए, हैप्पी स्टेट और कह सकते हैं एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड के लिए, उन लोगों के लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो समझे कि एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो मेडिटेशन करने से भी हमको मिल सकती है। जो कह सकते हैं परमानंद की अवस्था जो है, जो आनंद की अवस्था है, वो हमको मेडिटेशन करने से भी मिलती है। तो इस तरह के जो इफेक्ट हैं इसको हमने स्टडी किया और आगे भी बहुत सारे अलग अलग रिसर्च पैराडाइम से हम काम करते रहेंगे। और मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी का, जो हमारे साथ खास बेंगलुरु से जुड़े थे और उन्होंने राजयोग के ऊपर जो रिसर्च हो रहे थे उस पर अपने विचार व्यक्त किए। हमारे अगले वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर M.G. रमेश बाबू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी मलक्का, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, माहे, मणिपाल से। आइए सुनते हैं डॉक्टर रमेश बाबू जी से। Rajyoga meditation practice enhances positive thoughts, happiness, and alters gray matter volume of brain regions. Introduction. The objective of the present study is to identify the gray matter volume changes of brain regions in non-meditators and Rajyoga meditation practitioners by using structural MRI. Study the effect of meditation experience on alterations in various brain regions. Correlate and compare positive thought and the happiness scores of participants with specific brain regions. Rajyoga meditation is an open-eye meditation spiritual practice. During RM practice, a person sits quietly in a comfortable position and instructed to realize himself or herself as an eternal form, that is self or soul. Gaze on a point of light, considered as supreme soul or God. Think positively during meditation. Materials and methods. This study was carried out into two parts: questionnaire screening study and MRI study. In questionnaire screening study, we used Oxford Happiness Questionnaire, a standard tool to measure the happiness level of an individual. We also used newly developed questionnaire called as Thought Pattern Questionnaire to measure the positive thinking level of an individual. MRI study. From the questionnaire screening study, we selected 80 participants, consist of non-meditators 40, Rajyoga meditators 40. All the participants were matched for age, gender, and handedness, except their education level. The hours of meditation experience of RM practitioners was considered for correlation analysis. All the participants were scanned at Department of Radio Diagnosis and Imaging, KMC, Manipal, using Philips Akaiva 1.5 Tesla scanner. We obtained 3D T1 weighted high resolution structural images from all the participants. For the region of interest analysis, we created brain masks based on the MRI studies. We also created brain mask that represents reward centers of the brain based on the previous publications. Voxel-based morphometric analysis was used to identify the voxel-wise gray matter differences. We performed comparative analysis, that is t-test between NM and RM practitioners. Correlation analysis. We used multiple regression model for this correlation analysis to find out significant association between gray matter volume of specific brain regions with thought pattern and happiness score with meditation experience of RM practitioners. In both analyses, total intracranial volume, age, and education level were kept as covariate. All the results were considered significant at p less than 0.05, corrected for family-wise error rate using TFSE approach.
Comparison of positive thinking and the happiness scores of NM and RM practitioners. We observed increased positive thinking level in RM practitioners and also increased happiness level in RM practitioners, which is both were significant. The RM practice emphasizes on fundamental spiritual understanding of self or soul and its innate positive qualities within. That could be the reason for higher level of positive thinking in the happiness score in RM practice. Association of positive thinking and the happiness scores with hours of meditation experience, we found a positive significant with the hours of meditation experience and positive thinking score. This indicates that as there is increase in the meditation experience, the level of positive thinking increases. Whereas for Oxford happiness score, we found a trend towards the significant with hours of meditation experience, which indicates that RM practitioners can remain happy irrespective of their meditation experience. On Voxel-wise comparison of gray matter volume between NM and RM practitioners, a significant increase in the gray matter volume in the left middle temporal gyrus was found in RM practitioners. This region typically involved in greater attention control. This finding indicates that RM practice might help in gaining attention control. Comparison of gray matter volume of selected region of interest between non-meditators and RM practitioners. Significant increase in the gray matter volume in RM practitioners found in these regions. We are going to look at details about these regions. Right superior frontal gyrus. This region involves in sustained and selective attention as well as maintaining meditation. Along with the superior temporal sulcus, this region is associated with theory of mind. RM practice may help to sustain their attention on a focus or task and to engage in positive thinking. Left inferior orbitofrontal cortex. It is associated with reward and punishment, learning and adjusting one's behavior in response to a task. Disengage automatically generated thoughts and habits by enhancing self-regulation of emotions. Thus, practicing RM may help to motivate the learners to overcome the automatic thought process and maintain emotional self-regulation. Left inferior parietal gyrus. Increased gray matter volume in the left inferior parietal gyrus in RM practitioners than the non-meditators. And also, we observed significant positive association of left superior and inferior parietal gyri with hours of meditation experience in RM practitioners. These regions involved in maintaining body image and spatiality with respect to the environment. This result suggests that these regions help to regulate voluntary attention control while maintaining environmental awareness during RM practice. Bilateral precuneus, important in self-awareness and attention. Mediate subjective happiness by integrating the emotional and cognitive components of the happiness. A significant increase in the gray matter volume of bilateral precuneus in RM practitioners suggests that RM practice may help to enhance self-awareness, attention, and happiness. Bilateral cuneus. Cuneus involves in shifting and maintaining visual attention. In RM practice, meditators focus their visual attention on a point of light. Significantly higher gray matter volume in bilateral cuneus in the present study reflects the meditation technique practiced. Left posterior cerebellum subserves the functions of cognition and emotion. The present finding indicates that left posterior cerebellum involves in cognitive learning, that is thinking positively during meditation, and emotional stability in RM practitioners. Right superior temporal gyrus, a region that regulates the thought process. A significant positive association of positive thinking scores with this region reflects the enhanced positive thinking process in RM practitioners. On correlation of happiness score with brain regions, significant positive association in the brain regions, that is right superior frontal, left anterior cingulate, right orbitofrontal, and left insula were observed. And also we observed increased positive association with the hours of meditation in bilateral ventral pallidum. The regions which I have shown previous slide under the bilateral ventral pallidum are very important center for reward processing. They are important for developing positive motivations and experience of reward. These findings indicate that
RM practice may contribute to the automatic mind state of developing positive motivation and experience of reward. Conclusions. Regular RM practice increases neural plasticity in the regions that process regulation of self-awareness, behavior, automatic thought process, and visual attention. Enhance the gray matter volume changes in the regions that process positive thinking and reward. Helps in significantly increasing the ability to think positively and remain happier. Thus, practice of RM enhances gray matter volume changes and positive thinking process, a prerequisite for enhancing happiness and well-being. You can find out all those detail in these two publications. I acknowledge my guide, Professor Granmais Roy and Dr. Rajyoga for their guidance. I am very grateful to Rajyoga Education and Research Foundation, Mount Abu, for their permission and support in my study. My sincere thanks to Manipal Academy of Higher Education, Manipal, who permitted to use the infrastructure to carry out this study. Thank you. दोस्तों, ये थे डॉक्टर बाबू जो हमारे साथ जुड़े थे सीधे मणिपाल कर्नाटका से, और उन्होंने अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। इस सत्र के अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रामजयम गोविंदराज जी, जो साइंटिस्ट सी सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज निम्हांस बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर रामजयम गोविंदराज जी से। Om Shanti. All of you might be aware that SpARC Wing conducts research in two different lines. One is related to self-progress, intensive reading of Murlis, extracting the points and doing Purusharth based on that. The other kind of research is collaborating with professional research institutions across the globe to explore the Rajyoga meditation. So today I'm going to share the results of two research that has happened at Center for Consciousness Studies, Nimans, Bangalore, which was conducted in collaboration with SpARC Wing of Brahma Kumaris. So both the studies are about Rajyoga meditation proficiency and well-being. The first study was published in Consciousness and Cognition recently. The study title is Just a Minute Meditation, Rapid Voluntary Conscious State Shifts in Long-Term Meditators. So what was done in this study was, we all know about traffic control. Traffic control is to train ourselves so that we can shift our mental state as and when required in a way that is conducive to us. Say, for example, we are working and in between work, we just stop our thoughts and go into a meditative state and come back to our work. So this is the kind of training that we do for ourselves in the name of traffic control. So in this study, what was done was how good the meditators are in shifting their mental state as per their will, as and when required, that too in a rapid manner. So this was tested with this experimental protocol. What was done in this protocol was the study subjects, which included long-term meditation practitioners, short-term meditation practitioners, and also non-meditators. All of them were given a cognitive task which was very much intellectually engaging. Before and after this cognitive task, the cognitive task was for about 1.5 hours. So before and after this cognitive task, the subjects, especially meditators and also the non-meditators, they were also given instructions appropriately. The subjects were asked to remain in a state of rest and meditation for about 10 minutes. But how this 10 minutes was done was a state of rest for 1 minute, and immediately there would be a state of meditation for 1 minute. Again, rest for 1 minute, again meditation for 1 minute. So it was a rapid alternate rest and meditation, each lasting for about 1 minute. So this is how the task was introduced before and after the cognitive task, the rest and meditation. Both rest and meditation were done with eyes open as well as eyes closed. For meditation, the subjects were asked to visualize a point of light at the center of the forehead, which we call as soul consciousness state. So what was the result? What was the study findings? The data was analyzed in different ways. One is the experimenters, they have just
taken the states where the subjects were doing meditation with eyes open and also were in a state of rest with eyes open. So which is what is shown in this figure. RO is eyes open rest condition and MO is eyes open meditation condition. And on top you see LTP, STP and ZTP. LTP is long-term meditation practitioners, means people who are practicing meditation for at least 10 years or so, and short-term meditation practitioners practice duration ranging from 6 months to 2 years, and ZTP zero-term practitioners, which means non-meditators. And number of people were 36 for LTP, 25 for STP and 25 for ZTP. So what this figure is showing is only the long-term meditation practitioners were able to invoke a state of calmness, which was evidenced by this low frequency waves, that is theta wave in the frequency range of 6 to 8. So you can see here in the bottommost row, which is the difference between a rest state and meditative state, there are lots of red dots under LTP but not for STP and ZTP, which is suggestive of, compared to resting state with eyes open, long-term meditation practitioners, when they entered into meditative state with eyes open, there were more theta waves, but this was not found in short-term meditation practitioners and non-meditators. So that was one finding. The same thing the experimenters have analyzed with eyes closed condition as well. So what is shown in this figure is, on the left-hand side, it is for theta frequency with eyes closed condition during rest as well as meditation. On the right-hand side, it is for alpha frequency, again with eyes closed in rest and meditative state. So let's see what is there in the left-hand side figure. So in the left-hand side figure, what we see is only again the long-term meditation practitioners were able to induce a state of calmness evidenced by low frequency, that is theta waves, which you see here in the bottommost row, the difference row. There are a lot of red dots under LTP but not in STP and ZTP. On the right-hand side, another interesting finding is short-term meditation practitioners were also able to induce a state of calmness, but not at a theta frequency level, which is low frequency, much more lower the frequency compared to alpha. So short-term meditation practitioners were also able to induce a state of calmness, but not at theta frequency, but at alpha frequency, which is what you see here on the right-hand side figure, the bottommost row, the middle head, there are a lot of red dots. So what is the significance of this? The important thing about this finding in STP, short-term meditation practitioners, is even meditation practice on regular basis for few months can produce changes in our brain signals. Because many times people think like when we say meditation or yoga, they feel like we have to change our lifestyle and we have to do this for so many years together. Only then we will get the benefits. This is what many of the times people think, but it need not be so. Yes, of course, if someone is doing for a longer time, the benefits they may get would be more for sure, no doubt, which is evidenced even in this study also. But at the same time, even a short-term practice ranging from 6 months to 2 years can also produce good benefits, which would be useful for enhancing one's well-being and health. Another kind of analysis which the researchers, the experimenters have done was they have taken all the conditions, eyes open as well as closed, and they have merged all the things. All that they had finally for analysis was just 4 different blocks: rest, meditation, rest, and meditation. So as you see here in this figure, corresponding to these 4 blocks, rest, rest, and meditation, there are 3 rows. In each row, there are 4 heat maps corresponding to EEG signals. So the top row is for long-term meditation practitioners, the middle row is for short-term meditation practitioners, and the bottommost row is for non-meditators. So what is the interesting finding in this is, if you look at the middle row and the bottommost row, the change in the colors, which are all the brain signals in the theta frequency range, is progressive. Progressive means it becomes more and more intense as we move from left-hand side to the right-hand side.
What is the meaning of moving from left hand to right hand side? It means moving from rest to meditation, again rest and again meditation. So the change in the color in the middle and the bottom row is a progressive compared to the topmost row, which is for the long-term meditation practitioners. What it means basically, in common man terms, if I want to explain this, it is a little technical. So in a very common language, if I want to explain, it is like if someone is riding bike on the road, if there are no speed breakers, they would just ride the vehicle faster. They would just press the accelerator and the speed would keep increasing progressively. On the contrary, what if there are some speed breakers in between? Usually a normal person, what they would do is they would apply the accelerator, they press the accelerator, but as they reach the speed breaker, they would release the accelerator so that the bike slows down. Again, after crossing the speed breaker, they would raise the accelerator. Once again, when there is a speed breaker, accelerator is released. So they would have the capacity to raise their speed, come down, raise, come down, as and when it is required at their own will. So which means there is no progressive speed. Similarly here, this kind of increasing and then coming down, increasing, coming down was able to be practiced only by the long-term meditation practitioners, but not in short-term meditation practitioners and non-meditators, which is what is evidenced in this figure as a kind of progressive change in the colors in short-term meditation practitioners, as if they are pressing the accelerator, going to a distinct state of mind. But when there is a restful state, they are not able to come back also, which is also very equally important, which the long-term meditation practitioners were able to do, neither the short-term meditation practitioners nor the non-meditators. So this is another very interesting finding. So that is about this just a minute protocol. The second research was, okay, fine, if someone has a capacity to change their mental states from one state to another state very easily, what's the impact of that? Does it have any implication on health and well-being? That was tested in the second study. So what contributes to well-being gains? So that was tested in this, and how they have done this was around some 1,000 meditators were recruited for this, and they were assessed for a Rajyoga meditation proficiency with a comprehensive checklist which includes many of the names that we follow usually, like Amrit Vela meditation, Murli class, practicing virtues, seva, all these stuff. With the help of this, Rajyoga meditation proficiency was assessed, which you see on the graphs on the x-axis, and simultaneously they were also assessed for their state of well-being, something similar to the chart which we do to check our progress. So on those lines of construction, we also assessed the progress in well-being for all the meditators. So the interesting finding in this was, as the proficiency of the meditators was good, there were more progress in the well-being as well. On the contrary, there was a change in progress in well-being based on the number of years of meditation practice, but that was really not that great compared to change in the well-being with respect to proficiency. So this is very important, because many times people ask, I have come to meditation just only recently, is it possible for me to do Purusharth faster and attain a higher status? Yes, it is possible. That is what this research says. This doesn't mean that long-term meditation practice doesn't have any role. Yes, the accumulative effect that one can get because of long-term meditation practice, it is also there, provided there is a quality meditation practice. So that's the finding from this study. So in essence, these two studies suggest that long-term meditation practice is helpful to induce a more calm state of mind, which was evidenced by theta frequency waves from EEG. And what determines one's well-being, progress in well-being, is more to do with the proficiency of meditation practice or the quality of the meditation practice, but less to do with the duration of the meditation practice. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रामजय गोविंदराज जी का, जो हमारे साथ खास निमहांस बेंगलुरु से जुड़े थे। हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री रजनीकांत पांडा जी को, जो रिसर्चर हैं कोमा साइंस ग्रुप, गीगा कॉन्शियसनेस एंड सेंटर डू सर्वू, CHU हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीज, बेल्जियम के। आइए सुनते हैं उनके विचार। Philosopher says
meditation practice enhances peace and prosperity in life. It improves positive thoughts, which leads to happiness and well-being. In other side, since long time, cognitive neuroscientists trying to understand the effect of meditation on brain and cognition. With this regard, we conducted a study in 2011 at National Institute of Mental Health and Neuroscience, NIMHANS, which is situated at Bengaluru, India. The purpose of the study was to understand effect of meditation on brain dynamics and is there any impact in long practice of meditation in brain function and cognition. I again thanks SpARC Wing and Brahmakumaris who provided long-term Rajyoga meditator on whom we conducted this experiment. We measure brain function of Rajyoga long-term meditator in two conditions. We recorded at resting state when meditators are not involved with any cognitive task and not doing meditation. And we also record when long-term meditators are doing meditation. We also recruited age, gender, and education matched healthy subjects who are not practicing meditation to compare meditator brain and non-meditator brain. We record brain function using state-of-the-art of neuroscience technique, that is simultaneous EEG and functional MRI. Using this advanced neuroimaging technique, we looked two entities of the brain, that is default mode network, in short DMN, and microstate. Before going to explain you the effect of meditation on brain dynamics, let me explain you what is DMN and microstate. Default mode network, the DMN, is consist with set of brain region, that is posterior part of the brain, PCC, and precuneus, frontal regions, and temporal areas. This set of brain region synchronizingly together forms the network that activated during rest or when a person is not involved with cognitive task. The DMN network is linked to mind wandering, introspection, or future planning. Studies have shown that the patient suffering with psychiatric disease such as schizophrenia or ADHD, their brain forms hyperconnectivity within this network. In other hand, reducing DMN activity in through drugs or therapeutic procedure improves mental illness. In other hand, EEG microstate represents brain quasi stability of neural activity. Our brain have neural activity that are contain spatial pattern, and this spatial pattern have a quasi steady state and transit across time. The spatial pattern quasi steady state for a specific period, and this period duration or occurrence is increases depend on person's mental state, such as when a person having hyperactivity like anger or madness, the brain microstate duration or occurrence decreases. In other hand, if the person is involved in a focused attention or with a cognitive task, his microstate is increases. So it's linked to brain stability and thought processes. Now comes back to our study on meditation. In our study, we noted the core area of default mode network, that is PCC, and precuneus activity is reduces at meditative state, and the insula and frontal temporal area activity increases during meditative state. This decreased core area of DMN network indicate dissociative state in meditation. Indeed, during meditation practice, subject like to be dissociate with feeling of body and external awareness. The increased insula and frontal area could be linked with emotional control and higher order cognitive processes that facilitate meditative to be in meditative state. In other hand, we found
the microstate that links to DMN network is duration and occurrence increases during meditation state, and this increased duration indicate brain have a higher stability and better neural communication during meditation. Furthermore, we investigated how the long year of meditation practice make impact on brain dynamics. We noted in long-term meditator, their brain dynamics at rest state are similar to their meditative state. This indicates many years of meditation practice modulate brain dynamics permanently, which have huge impact on behavior and cognitive ability. As a conclusion, meditation practice improves brain stability and efficient neural communication that have a huge impact on behavior and cognitive functions, including many clinical applications, such as in neuropsychiatric disease management, such as managing the stress level and depression. There is many things to discover across the world. Many scientists are now trying to understand the effect of meditation. They're conducting a lot of study on both basic neuroscience aspect to understand how is modulating the brain dynamics, as well as trying to find the in clinical aspect as an alternative medicine. We also doing a lot of research, and it's long. There is a long way to go. However, I should say we all must practice meditation, not just a while, every day, regularly. Thank you so much for listening to me. Om Shanti. हमारे साथ जुड़े थे श्री रजनीकांत पांडा जी, जो रिसर्चर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लीज, बेल्जियम से हमारे साथ जुड़े थे। आप सबकी तरफ से उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे इस टेक्निकल सेशन के आखिरी वक्ता के रूप में हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी जुड़ रही हैं, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों को ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स शेयर करने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल है राजयोग सकाश फॉर रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स। जी हाँ, राजयोग मेडिटेशन एंड रोड एक्सीडेंट्स। जितने ही इंटरेस्टिंग इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं, उतना ही इंटरेस्टिंग इन दोनों पहलुओं का कोएग्जिस्टेंस भी है। कहते हैं सेफ्टी इज नॉट अ गैजेट बट इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अर्थात सेफ्टी, एस्पेशली रोड सेफ्टी, ये कोई गैजेट नहीं है, या ये केवल मात्र टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ही नहीं है, लेकिन वास्तव में रोड सेफ्टी इज मोर अ स्टेट ऑफ आवर माइंड, कि हमारी मन की स्थिति कैसी है, कितना स्टेबिलिटी के साथ हम वाहन को पायलट करते हैं या सड़कों पर यात्रा करते हैं। साथ साथ दोस्तों कहते हैं ह्यूमन नेचर इज अडेप्टेबल, रोड एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। जब हम ये फेथ रख करके चलते हैं कि ह्यूमन नेचर हैज द कैपेसिटी टू अडेप्ट, टू मोल्ड इटसेल्फ, हम अपने आप पर अटेंशन देकर थोड़ी सी बातों को स्मृति में रखते हुए समझदारी के साथ अगर चलें, तो हम जरूर अपने रोड बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। रोड डिसिप्लिन फॉलो करना फिर हमारी दिल की बात हो सकती है, केवल नियम के आधार से ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही नेचुरल संस्कार। और जब इस प्रकार से हम रोड डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सेफ रोड बिहेवियर को अपना बनाते हैं, तो बाहर की सड़कें क्यों नहीं सुरक्षित होंगी। हर बार घर से कदम रखते हुए बाहर हमें ये विश्वास होगा कि हम सुरक्षित
पुनः अपने घर लौट कर आएंगे। तो इसी विश्वास के साथ अपनी मन की स्थिति पर भरोसा रखते हुए और ह्यूमन नेचर अडेप्टेबल है इस बात को विश्वास में लेते हुए ब्रह्मा कुमारीज की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग और स्पार्क विंग, जो कि राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ये विंग्स हैं, हमने मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट 2018 में की थी। आइए अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की मॉडस ऑपरेंडी क्या रही। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमने एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन किया, एक स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया और हमने सोचा कि मेडिटेशन के द्वारा प्योर थॉट्स हम इस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन को देंगे। उसके बाद जो कई समय से राजयोगा मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करते हैं, ऐसे राजयोगियों को अप्रोच किया गया और उन्हें एक्सपेरिमेंट ऑफर की गई कि आप चाहें तो स्व इच्छा से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करना अर्थात पार्टिसिपेंट की कमिटमेंट क्या रही? वो इस प्रकार से थी कि 1 महीने तक for the duration of 1 month 45 minutes daily every participant को एक specific guided commentary पर meditation करना है at a stretch, अर्थात 45 minutes हर रोज एक ही गिवन कमेंट्री के संकल्पों के आधार से एक ही स्ट्रेच में, माना 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 25 मिनट्स इन द इवनिंग, ऐसी नहीं, कंटिन्यूअसली फॉर 45 मिनट्स ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट को 30 डेज तक, 1 महीने तक रोज 45 मिनट्स करनी थी। हाँ, टाइम ऑफ द डे पार्टिसिपेंट अपने आप चूज कर सकता अपने शेड्यूल के हिसाब से। आइडियली तो राजयोगी मॉर्निंग आवर्स ही सिलेक्ट करते, लेकिन फिर भी इन केस मॉर्निंग टाइम सुटेबल ना हो तो एनी टाइम ड्यूरिंग द डे बट 45 मिनट्स एट अ स्ट्रेच ये मेडिटेशन करना रहा। साथ साथ हर पार्टिसिपेंट ने अपनी कमिटमेंट का, अपने पार्टिसिपेशन का एक सिंपल चार्ट रखा। वेदर आई कंप्लीटेड माई 45 मिनट्स मेडिटेशन टुडे, यस या नो। अर्थात पार्टिसिपेंट को ये एक एंट्री करनी थी कि आज के दिन पर उन्होंने अपना ये मेडिटेशन किया या नहीं किया। साथ साथ एक और टीम रही कि जो पुलिस स्टेशंस को, जो उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन के संबंधित पुलिस स्टेशन थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पुलिस स्टेशंस, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स गए और पास्ट 1 ईयर का मंथली बेसिस पर नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स एंड नंबर ऑफ इंजरीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, इसका डेटा कलेक्ट किया। ये वो पुलिस स्टेशंस थे जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में हमारा एक्सपेरिमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया हुआ ज्योग्राफिकल लोकेशन आता था। जो राजयोगी इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहे थे, उनके अंदर एक विश्वास रहा, एक फेथ रहा। वो फेथ ये रहा, व्हाट वी थिंक वी क्रिएट। अर्थात ये विश्वास को लेकर के हम चले कि हम जिस चीज की संकल्पना करते हैं, विजन करते हैं, जिस संभावना में हम विश्वास रखते हैं, उस संभावना को हम साकार में भी जरूर देखेंगे। वैसे भी कहते हैं फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड ट्वाइस, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड इनसाइड एंड नेक्स्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो उसी विश्वास को लेकर राजयोगी भाई बहनों ने अपनी मन की स्क्रीन पर सेफ ट्रैवल्स को, सेफ जर्नीज को, सेफ रोड्स को, सेफ ट्रैवलर्स को विजुअलाइज किया। इस सेफ्टी की यात्रा में परमात्मा की मदद को, परमात्मा के सुरक्षा कवच को भी विजुअलाइज किया और साथ साथ मदर नेचर को भी विजुअलाइज करते हुए एलिमेंट्स ऑफ नेचर को भी कमेंट्री के जरिए प्योर थॉट्स पहुंचाए। और ये विश्वास रहा कि व्हाट वी कैन सी इनसाइड वी विल सी आउटसाइड। जो कहते हैं इफ यू कैन सी इट विथ योर माइंड्स आई, यू विल सर्टेनली सी इट विथ योर फिजिकल आई। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि का हम निर्माण करते हैं।
every manifestation in the world outside is rooted in the seed of my thoughts inside. तो जो राजयोगी भाई बहने इस मेडिटेशन में जुड़े, ये उनका विश्वास रहा, ये उनका फेथ रहा, ये उनकी कमिटमेंट रही, और इस विश्वास, इस कमिटमेंट के साथ परमात्मा के साथ योग लगाने की विधि को अपनाते हुए और अपने मन की स्क्रीन पर बहुत सुंदर विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हुए 1 महीने तक एक ही कमेंट्री पर 45 मिनट्स डेली इन राजयोगी भाई बहनों ने गिवन ज्योग्राफिक लोकेशन के लिए मेडिटेशन किया। इन एडिशन टू दिस, वंस अ वीक ये सारा टीम, ये सारा ग्रुप जो एक्सपेरिमेंट में मेडिटेशन कर रहे थे, वो वंस अ वीक एक स्थान पर, एंड इन मोस्ट केसेस ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर पर ये एकत्रित होते और उस एक मेडिटेशन सेंटर पर एक साथ एकत्रित हो करके वो सेम मेडिटेशन कमेंट्री जो ड्यूरिंग द वीक वो इंडिविजुअली करते रहे, मोस्टली ये कलेक्टिव मेडिटेशन वीकेंड्स पर होता, तो वीकेंड पर वंस अ वीक 1 टाइम ये मेडिटेशन कलेक्टिवली भी इस टीम ने किया। और जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग और एक आई ओपनिंग रिजल्ट्स रहे। आपको भी क्यूरियोसिटी होती होगी ना कि क्या रिजल्ट्स रहे, तो आइए अब हम आपसे शेयर करते हैं 4 रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर जो ये राजयोगा मेडिटेशन फॉर रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स की एक्सपेरिमेंट की गई उसके रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले आइए चलते हैं पुणे। पुणे में फरवरी 2018 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके रिजल्ट्स आप यहां सामने देख रहे हैं। पुणे में करीब 138 राजयोगी मेडिटेटर्स ने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया। इसके अंतर्गत पुणे के ब्रह्मा कुमारीज के 8 सेंटर्स से ये भाई बहनें बिलोंग करते थे। जो ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई किया गया था उसके अंतर्गत 5 पुलिस स्टेशंस आते थे और फरवरी 2018 में पूरा महीना ये राजयोगी ग्रुप ने गिवन कमेंट्री पर स्पेसिफिक मेडिटेशन किया और जो डेटा कलेक्ट किया गया था पुलिस स्टेशन से, उस डेटा के साथ जब रिजल्ट्स टैली किए तो रिजल्ट्स इस प्रकार से रहे। जो 2017 की 12 मास की एवरेज रही रोड डेथ्स एंड एक्सीडेंट्स की, वह थी 20.7 डेथ्स और एक्सीडेंट्स एवरी मंथ। और जब इस एवरेज के सामने जिस महीने में फरवरी 2018 में जब एक्सपेरिमेंट की गई तो ये डेथ काउंट 20.7 से कम होकर के 15 पर पहुंची, अर्थात विथ रेफरेंस टू एनुअल एवरेज जो परसेंटेज रिडक्शन रही रोड एक्सीडेंट्स में वो थी 27.5%। और फेब 2017 और फेब 2018 की रिजल्ट्स भी इंटरेस्टिंग रही। मंथ ऑन मंथ एवरेज को जब कंपेयर किया तो 16.7% रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट्स देखा गया और इसमें इंटरवेंशन केवल और केवल मेडिटेशन का था। उस मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट में ये सबसे पहला प्रयोग पुणे के टीम ने किया और पुणे से इंस्पिरेशन लेते हुए फिर बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में गामदेवी सेंटर और साथ साथ थाने और नॉर्थ मुंबई में बोरिवली सेंटर और बोरिवली से कनेक्टेड जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं उन्होंने किया। आइए एक नजर डालते हैं थाने के रिजल्ट्स पर। थाने सेंटर में करीब 86 भाई बहनों ने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया और ये थाने में मई 2018 में ये एक्सपेरिमेंट की गई थी। तो थाना डिस्ट्रिक्ट की गिवन ज्योग्राफिकल लोकेशन की एनुअल एवरेज ऑफ रोड डेथ्स एंड एक्सीडेंट या इंजरीज जो थी वह रही 12.42। लेकिन जब मई 2018 में मेडिटेटर्स की टीम ने ये मेडिटेशन किया तो वो उस समय 12.42 से कम होकर के देयर वर ओनली 7 इंस्टेंसेस ऑफ ईदर इंजरी और डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट व्हिच केम टू एन इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ
43.6% with respect to the annual average, which is quite an achievement. और इसी प्रकार से जब मई 2017 और मई 2018 को कंपेयर किया गया तो द नंबर्स reduced from 11 to 7, which means a reduction of 36.3% देखा गया। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें भी इंस्पायर करते हैं कि क्यों ना हम भी ऐसे मेडिटेशन के जरिए अपने लिए एक सुरक्षित दुनिया तैयार करें। लेकिन देयर आर इवन मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स टू कम। साउथ बॉम्बे में गामदेवी सेंटर के जब भाई बहनों ने इसमें भाग लिया तो गामदेवी की टीम स्ट्रेंथ रही 41 पीपल, और 41 पीपल ने जब मेडिटेशन किया तो फ्रॉम द एनुअल एवरेज ऑफ द गिवन लोकेशन विच इज 7.25, द नंबर्स केम डाउन टू ओनली 3 injuries or instances of accident or death in May 2018, अर्थात 58.6% से एनुअल रोड इंजरी या डेथ की संख्या कम हुई। और अगर मई 2017 एंड 18 को कंपेयर करते हैं सो द नंबर्स केम डाउन फ्रॉम 9 इन 2017 टू ओनली 3 in 2018, जिसका मतलब है almost 67% reduction in road deaths and accidents। ये numbers कान को impress तो करते हैं, लेकिन मुझे याद है गामदेवी में एक पार्टिसिपेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो एवरी डे जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो जिस सड़क से वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वहां पर काफी सारे डॉग्स हैं, और वो डॉग्स बार्क कर करके जैसे एक बहुत एनोइंग फीलिंग होती थी इनकी मॉर्निंग वॉक के जरिए। कभी कभी तो वो बहन सुना रही थी कि डॉग्स इतने नजदीक भी होते जो थोड़ा सा डर भी लग जाता, और कहते हैं कि वर्षों से मॉर्निंग वॉक के समय हमेशा ऐसे लगता कि काश ये यहाँ पे डॉग्स ना होते तो हमारी वॉक की एक्सपीरियंस और सुंदर होती। और कहती कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए और इस प्रकार से मेडिटेशन, विजुअल मेडिटेशन किया, विजुअलाइजेशन करते हुए मेडिटेशन किया, हमने सभी को मन से बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट्स दिए, क्योंकि जो कमेंट्री बनी हुई है उस कमेंट्री में भी बहुत अच्छे थॉट्स हैं विच डील विथ मदर नेचर, विथ ग्रैटिट्यूड, विथ रिस्पेक्ट, विथ सेल्फ डिग्निटी। ऐसे तो कहते हैं कि जब मैंने ये कमेंट्री से मेडिटेट करना शुरू किया, मैं मॉर्निंग वॉक से पहले अर्ली मॉर्निंग ही ये कमेंट्री पे मेडिटेट कर लेती थी, और जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो शी सेड आई वाज सरप्राइज्ड, डॉग्स वर स्टिल अराउंड बट दे डिडंट बार्क, दे डिडंट एनॉय मी। मैं बड़े आराम से प्लेजेंटली उस मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करके वापस आई, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू माई सेल्फ कि जो मेडिटेशन मैंने किया है उसका ये इम्पैक्ट भला कैसे। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हमने देखा नंबर्स ऑल्सो स्पीक वॉल्यूम्स, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कि जो हमें ये रीअश्योर कराते हैं इन दी पावर ऑफ आवर माइंड कि हमारे माइंड का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, नॉर्थ मुंबई तरफ बोरिवली सब जोन जो ब्रह्मा कुमारी इसका है, बोरिवली सब जोन के सभी सेंटर्स ने मिलकर के भी ये एक्सपेरिमेंट की, और इस एक्सपेरिमेंट में अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ मुंबई का जोगेश्वरी से लेकर विरार तक तो पूरा कंटिन्यूअस पैच उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को विजुअलाइज किया, उसको आइडेंटिफाई किया। 1546 meditators participated in this experiment। और जैसे कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि थोड़ा बड़े पैमाने पर किया था, इट वाज अ वाइडर ज्योग्राफिकल लोकेशन, 22 पुलिस स्टेशंस की ज्यूरिसडिक्शन का जो एरिया है वो एरिया को कवर करते हुए जब देखा तो इस बिगर स्केल एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि एनुअल एवरेज जो थी इस पूरे एरिया की
road deaths की, because this was a wider patch we only considered deaths due to road accident, not injuries. तो 26 एनुअल एवरेज इस पूरे एरिया की रहती थी, और मेडिटेशन जिस महीने में किया गया उस महीने में दिस नंबर फॉर द एंटायर स्ट्रेच reduced to 21. अर्थात अगर परसेंटेज में बात करें तो there was a 19.2% decrease in the deaths due to road accident. और इसी प्रकार से जब मई 2017 एंड मई 2018 को कंपेयर किया गया तो उसमें रिडक्शन वाज बाय ऑलमोस्ट 4.5% डेथ्स. ओवरऑल हर एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स कम हुई. इंटरवेंशन और कुछ नहीं था, लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी. लेकिन इस मेडिटेशन के एक्सपेरिमेंट में एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिला जो हर स्थान पर वी कुड सी डिक्लाइनिंग नंबर्स. एक और ऑब्जर्वेशन ये भी रहा कि जो उस स्थान के लिए एपिसेंटर था, जैसे फॉर इंस्टेंस बोरिवली वाला, बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग पैच ऑफ नॉर्थ मुंबई, द ज्योग्राफिकल लोकेशन, बोरिवली वाज द एपिसेंटर ऑफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट. और उस एरिया में जब बोरिवली की एरिया के रिजल्ट देखे गए तो मई 2018 में बोरिवली ईस्ट स्टेशन से देयर वाज 0 डेथ and 0 injury report. अर्थात the result was the best at the epicenter of the initiative. ये भी एक ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल रहा. फ्रेंड्स, इमेजिन अगर हमारे मन से हम कोई चीज सोच ले और ठान ले तो उसकी रिजल्ट कितनी ना सुंदर हो सकती है, कितनी ना ब्यूटीफुल हो सकती है. अगर हम सभी अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं, मेडिटेशन को एक मौका दे, मेडिटेशन को एक अपॉर्चुनिटी दे, तो हम भी इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया, एक सेफर वर्ल्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम तो ये कार्य कर रहे हैं और आपको भी इनवाइट करते हैं कि इस डिवाइन इंटरवेंशन में आप भी हमारे साथ चलें. क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? Let us give some time for meditation on a daily basis and create a better world together. क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज के रोड सेफ्टी इनिशिएटिव का भी एक विजन है. वो विजन है the vision of a safe world, a world where every road vehicle is foolproof, every road is safe. हर यात्री एक आदर्श यात्री है और हर यात्रा एक आनंदमय यात्रा है. इट्स अ प्लेजरेबल जर्नी. ऐसी दुनिया के विजन को लेकर के ब्रह्मा कुमारीज की ये रोड सेफ्टी इनिशिएटिव कार्य कर रही है. और इस प्रकार से मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स मिल करके हम स्पार्क विंग के साथ करते हैं. आप भी अपने जीवन में मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, मेडिटेट करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर आकार दें. ऐसी हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कविता दीदी जी का. सुबह के 2 सत्रों में दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे विषयों पर चिंतन किया है, मंथन किया है और बहुत सारी चीजें हम सबको स्पष्टता से समझ में आई है. आज शाम के सत्र में 5वें प्लेनरी सेशन में मुलाकात करेंगे. इस 15वें स्पार्क रिसर्चर्स इन स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस के शाम के सत्र में जुड़ना न भूलें. शाम के सत्र का विषय एंगेजिंग द स्पिरिचुअल माइंड, द हीलिंग पावर ऑफ गॉड इस विषय पर रखा गया है. आशा करते हैं कि शाम के सत्र को आप एंजॉय करेंगे. शाम को फिर मुलाकात होगी. तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल. नमस्कार. ओम शांति. It is said that science has an answer to every question. Yes, it has the answer to most questions of the outer world. But when it comes to the questions of our inner world, the world of thoughts and feelings, consciousness and spirituality need to be integrated. Brahma Kumari's SpARC Wing presents a 2 days e-conference
Expanding Horizons, Science, Consciousness and Spirituality. (25th and 26th September, 10 a.m. to 12:30 p.m. and 5:30 p.m. to 7:30 p.m. on Awakening TV channel, Tata Sky 1084, GeoTV 1060. You can also watch it online on Brahma Kumari's and SpARC Wing Facebook and YouTube channel.